read some of the questions from yesterday, but purely because of the conditions yesterday. Yeah. It didn't come out very accurate. Are we ready? Assalamu alaikum to our viewers across the globe. Welcome to the first semi-final of the Masroor T20 International Cricket Tournament. I have the pleasure of speaking to the Canadian captain today. His name is Raza Rahman, and he also is Canada's national team player. So Raza, lovely to see you. Nice to see you too. And give us a brief introduction to how you found the conditions here so far and the tournament itself. So the conditions have been pretty good. As far as my understanding is, they're not the best that the UK has to offer, but compared to a lot of the conditions that we're coming from, we're very grateful to be playing on grounds like this, and then especially today's ground. This is probably the best ground I've seen in a long time, especially playing in Canada. So we're today at Kingston University ground, here in the heart of Kingston in Surrey. It's a beautiful day. The teams, as you can see, have just got here. The match will not start until 10 o'clock, so we've got 35 minutes. Explain to me a little bit about what is the state of cricket in Canada? Is it regional? Is it provincial? Or how is the team selected as well? So two questions. Tell us a little bit about what cricket is like in Canada first. Yeah, absolutely. So it starts at the grassroots. So a lot of cricket is starting in high schools as well. So it's starting from there, and they come through to the club level. The club levels, they're divided, of course, by division. Starting with the Super League, that's the top 6 teams in the Toronto District League. That's where the Canadian team is primarily selected from, majority of the players. And then obviously there's some out-of-province players as well, which finish up the team as well. So maybe I'd say if you have a core group of about 25, probably 5 of them will be from out-of-province, but majority of cricket, majority of the talent is in the greater Toronto area. And you have a selection panel of 3 to 4 people who can select the 2 teams? Absolutely. So we have a selection panel, and then there's of course the chief selector, yes. And then the coach as well of the team. So they all get together, they travel around Canada to pick the Canadian team. They do tryouts in all the provinces, and then there's camps held within Toronto as well, and then they filter down and select the final 15. Fantastic. Yeah. So tell me a little bit about yourself. You started out your cricket in Pakistan for under 19. Yeah. And moved over to Canada, right? How's the Canadian scene in terms of international cricket? So the Canadian scene is very different. Obviously the conditions are not in our favor. It's nothing like Pakistan. In Pakistan, obviously the weather is on your side. It can get very, very hot there compared to Canada, which gets very, very cold. So it is a little different in Canada. The conditions, in terms of the pitches, there's a lot of artificial pitches that we play on. So playing on turf, we're not very accustomed to playing on turf as much as we would have liked. But it's just a matter of adjusting. I think that's what all the best players do, have to adjust, right? Well, we wish you well today, and good luck with the tournament. Thank you so much. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum. Raza yaar, please, जरा वो So, inshallah, we'll start proceedings at, I would imagine, 9:45 this morning. We apologise for the delay. It's a beautiful day here in Surrey. We're in the heart of Kingston, at the university grounds. We've got covers, so the pitch is going to be pretty firm. And I would imagine the ball early in the day is going to swing around a little bit. There's a bit of moisture here as well, and I think it's conducive to, based on what I've seen, because of the pitch being covered, I think it's conducive to batting first, but we'll wait to see. The umpires are out here as well. The 2 captains we've just spoken to Raza Rahman. The 2 captains will shortly get out to the centre of the pitch and toss up. And it really does provide a real great spectacle for cricket. Canada have won this tournament. This is the 8th year of this tournament. Canada have won the tournament on 3 occasions. England have won it on 3 occasions. Germany have won it once as well. So, and this is the first semi-final here being played today. So it's England versus Canada, which we'll be showing to you. The second semi-final is between England A and a team called Amir. That is taking part in the adjacent field to us here, to our right-hand side. The day itself will see the semi-finals in the morning, and then around about, I would suggest about 2 o'clock, we'll be showing live coverage of the final from the Abbey Recreation Ground in Morden. So if viewers would like to come along and see that,
You've seen here international players Raza Rahman of Canada, who's captain of the Canadian team. The standard of cricket is exceptionally high. There are a minimum of 5 first-class players who are playing. Captain of the England team is a gentleman called Khalid Zafar, and I'll bring Khalid. Hopefully, he's doing all his drills with his team in the back corner, but hopefully we'll bring Khalid to you. Khalid plays for Reading as their overseas player. He plays in the Home Counties League. He was voted bowler of the tournament here last year, and he's been captain of the winning England team for the last 3 years. So he's obviously hoping he'll make it 4th time as well. Their coach is a gentleman called Nadeem Malik. Nadeem used to play for Surrey Seconds when he was younger, and has a great pedigree as a coach. He's really turned around the team. The team has evolved. It's a good blend of youth and experience, led by, for example, the captain, who I've mentioned is Khalid, and the vice captain is a gentleman called Gasser Mahmood. For those of you who don't know Gasser played first-class cricket in Pakistan. He scored 100 against Shoaib Akhtar at his prime, so it sort of gives you an idea of the standard of some of the players here. And similarly, some of the players playing out for Amir as well have been playing first-class cricket in Pakistan. One of them is Abdul Aziz, affectionately known to most of us as Mittu. And I'm just looking over my shoulder to see if I can get a glimpse of the England team, who are out there in the far corner just doing their preparations and final sort of prayers before the start of this first semi-final. But we couldn't have asked for a nicer day today. It's beautiful. Yesterday was a bit drizzly and overcast, and thank God today it's proved to be such a wonderful day, and we hope the cricket will match the actual event itself, which is a clash of 2 titans, 2 teams who have both won this tournament 3 times respectively, and it should be really, really interesting. I know the Canadian team, as well as Reza, has another first-class player from Pakistan who we'll try and get hold of later on and give you a short interview. But a beautiful day, a great spectacle here for the 8th International Masroor T20 cricket competition. This tournament was started off back in 2008. The first winners were Canada, and then Germany won it, and subsequently England have won it 3 times as well. On the last 3 occasions, England really have pulled it round, and again we were fortunate that just over 10 days ago England took advantage of having Julian Wood, who is the national England T20 batting coach, down at the Surrey Oval. And for anybody who's been involved in this tournament, that really was a change, because here you have a batting coach who's coaching the current England T20 team, coming along and giving them advice on what are some of the techniques of power hitting. So they were using, for example, different balls. Some of the balls, the heaviest ball was 32 ounces. And if you take into account a normal cricket ball is 5 1/4, 32, and they varied their batting techniques. So he showed a particular style and a technique which would allow players to get maximum benefit of hitting a T20 stroke. So 2 hours at the Surrey Oval, and for those of you who would like to see that, it has been recorded on our website. It is www.majlis-e-sehat.co.uk, and you can tweet us to here today with your comments as well. We'll broadcast them live for you. The tweet is at MAJLISEHAT at Majlis-e-Sehat. Please tweet to us, tell us what you think of the commentary and the broadcast today. We'll be giving you ball-by-ball coverage as proceedings start. The team is still making their final preparations, but they will shortly all be coming here
to get ready for what proves to be a really, and similarly, if you can see here, the Canadian team on the right-hand side, they're just going through their final drills. A lot of catching, a lot of throwing, just loosening up all the muscles, making sure the bowlers are hitting their marks. It's a great spectacle today, and the day passes so quickly when you're involved in a tournament of this nature. This is the fourth day of the tournament. The players are tired. There is a lot of movement, and we can see there now that the first captain, the Canadian captain, is out in the middle, and we'll shortly be finding out who has won the toss and who will be bowling and who will be batting. So Raza is there in the middle. He'll be joined by Khalid Zafar, and between them and the captains and the officials will be giving you an idea of who will be batting and who will be bowling. So this tournament, as I was explaining to you, started out 8 years ago. We have 8 venues across London. Some of them are beautiful cricket grounds. Dunedin is one of my favourites. It's a beautiful cricket ground here in the heart of Surrey in Kingston. The finals this afternoon will be in Abbey Recreation Ground. We've also used Barn Elms Cricket and a whole number of other venues, 8 in total. And my fellow co-commentator will be coming, and the toss is now being held, and we'll shortly make you aware of who has won that and who will be batting and who will be bowling. So Shazad, have you got a minute? Just one. Okay, could you come and see? Yeah? All right, okay. So Wasim is one of the players here, and just a quick, Wasim, this is your second final? Yeah, this is my second. All right, and how have you found the tournament so far? It's been great, really great. Really enjoyed that. I played 3 games initially at group stage, and it's been great. We, as an environment in the team, is great. We've been enjoying the cricket. Yes. We have some plans, we're sticking to it, and it's all working out. So Fantastic. Yeah. And Wasim, who do you play for out here in the UK? I played for this season. I changed my club. I played for Hampton Wick. Okay. This season, before that, I played 4 years. I played for all location. Fantastic. Yes. Right. It's been really great playing for the UK. Well, we wish you well. Thank you. And thank you for your time, and look forward to seeing you perform later on. Assalamu alaikum. So hopefully we'll find out really shortly what the players are. The toss is yet to be done by the officials. More players arrive and more spectators in the ground, and this afternoon should be quite a spectacle. There's normally about 1,200 people at the main venue itself. It's a great atmosphere. There's families with picnics. There's a lot of local people there as well, and it's become a real festive of cricket for those who come along to it each year and see the tournament go through. So a lot of Canadians are now arriving with their supporters, as they have 2 teams here. The format is that we will start, inshallah, at around about 9:45 is when we're planning to kick off. 20 overs per side, 5 overs per bowler, and we're just waiting to see what's happening. The toss is taking place. And England have won the toss and elected to bat. So that's been a strategy which they have undertaken pretty much throughout this tournament so far. In all of the preliminary matches they had, in the quarterfinals, they also bat
batted first. They batted first yesterday against Switzerland in the first quarter-final and accumulated a total of 248. Top scorer of the day was a gentleman called Daud Ahmed. He scored 135, not out in his 20 overs. And for those of us, if you want to see the match, it's been recorded on our website, but he batted really well. Some phenomenal hitting, a lot of straight drives. We saw some good pulls as well, and I think the advantage of having Julian Wood as the England batting coach really did help him. So when it's ready, I'd like to ask my fellow co-commentator, Mubarak Saab, who's looking very nice this morning, to come along and say a few words to our viewers in Urdu. And Assalamu alaikum Mubarak Saab. Another beautiful day by the grace of God. अभी तक तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। अभी थोड़ी देर में टॉस आपने देखा कि इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले फैसला किया बैटिंग करने का, और कल जो मैच क्वार्टर फाइनल हुआ है उसमें इंग्लैंड की टीम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उसके बैट्समैनों ने और बॉलर्स ने एज वेल, फील्डिंग भी बहुत अच्छी रही उनकी। और आज देखना ये है कि बैट्समैन उसी तरह अपना किरदार निभाते हैं या नहीं। तो अभी थोड़ी देर में हम आपको दोनों सेमीफाइनल्स जो है वो दिखाएंगे। एक इंग्लैंड और कनाडा के दरमियान है, और दूसरा जो सेमीफाइनल है वो हमारे साथ वाली ग्राउंड में अमेर 11 और यूके इंग्लैंड ए के दरमियान होगा। तो दोनों के दरमियान जो दोनों सेमीफाइनल्स हैं उसका हम आपको रिज़ल्ट भी बताते रहेंगे, बॉल टू बॉल, और आपको दिखाएंगे भी ये मैच। इंशाल्लाह हमारा और आपका साथ चलता रहेगा। इस वक्त इंग्लैंड के जो कैप्टन हैं खालिद ज़फ़र, उनसे हम आपको मुतारफ़ कराते हैं और उनसे थोड़ी सी हम बातचीत करते हैं, ताकि उनकी स्ट्रेटजी का और उनके जो टीम साइट है उनसे पूछा जा सके कि किस तरह उन्होंने तरतीब दी है और उनका क्या प्लान है। 2 मिनट दे दें, ये मैच शुरू होने से पहले। तो आज मौसम सुबह का तो काफ़ी खुशगवार था, लेकिन अभी थोड़े से बादल नज़र आ रहे हैं। थोड़ी देर में ही ये मैच अंपायर्स जो हैं वो आप देखते हैं कि ग्राउंड में मौजूद हैं। कनाडा की टीम भी आहिस्ता ग्राउंड की तरफ जा रही है। किंगस्टन यूनिवर्सिटी ग्राउंड से हम आपको ये लाइव मैच दिखाएंगे। दोनों टीमों की जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल बैलेंस हैं और बड़े ही मंजे हुए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ही हैं दोनों टीमें। स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स, मीडियम पेसर्स और स्लगर्स, काफ़ी अच्छी बैलेंस टीमें हैं दोनों। हार्ड हिटर्स भी मौजूद हैं दोनों टीमों में। और अब भी खालिद ज़फ़र साहब यहाँ तक आ रहे हैं, तो हम आपसे इनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद ज़फ़र साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक माशाल्लाह। आपकी प्रीवियस कारकर्दगी तो हम सारे हमारे व्यूअर्स भी देख रहे थे, और हमें भी पता है कि काफ़ी अच्छी रही है आपकी टीम की परफॉर्मेंस, आपके बैट्समैनों की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रही। तो आज चूँकि बहुत बड़ा मैच है, आपको बखूबी अंदाज़ा है कि कनाडा की टीम के भी प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल लेवल पे खेलते हैं, और आप लोग भी यहाँ पे अच्छी टीम जो लीग्स हैं उनमें सारे प्लेयर्स खेलते हैं आपके लिए। क्या समझते हैं कि आज का मैच वन साइडेड तो बहरहाल नहीं रहेगा, बहुत बड़ी फाइट होगी, बहुत बड़ी जंग होगी आप दोनों टीमों के दरमियान?
तो क्या फ़र्क क्या महसूस करते हैं दोनों साइडों पे कि क्या फ़र्क है जो आपको बेहतर करता है या उनको आपसे थोड़ा सा अलग करता है? कोई है ऐसी प्लानिंग? सबसे पहले तो बहुत अच्छी गेम होगी और जो आज अच्छा खेलेगा ग्राउंड में वो मैच जीतेगा। और बैलेंस की बात है जहाँ तक, तो हम लोग 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह खेल रहे हैं और इस साल हमारी साइड जो है वो बैलेंस है और हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया इस पर और वी होप वी विल डू वेल। वो तो हमको पता चलेगा मैच के बाद कि हाउ मच हार्ड वर्क। मुझे महसूस हुआ है आपके इस जवाब से कि जैसे कि आपने कहा कि इस वक्त हमारी टीम बहुत बैलेंस है। इसका मकसद ये है कि आपके पास स्पिनर भी बहुत आला हैं, पेसर भी बहुत अच्छे हैं, मीडियम पेसर भी बहुत अच्छे हैं, हार्ड हिटर भी बहुत अच्छे हैं और जो एक ठंडे दिमाग से खेलने वाले हैं वो भी एक मेच्योर्ड प्लेयर्स आपके पास मौजूद है। क्या ये सही है? हमने बेसिकली जो अपना प्लान किया है उसके 3 फेज बनाए। उसमें हमारा बॉलिंग है, उसको बैलेंस है, फील्डिंग है, उसको बैलेंस है, तो मैं 5 मैच करा दूं मैं, जिसकी वजह से हमारा माइंडसेट माशाल्लाह। तो अभी जो मैच उनकी टीम में जो आप महसूस कर रहे हैं, उनकी टीम की आप बैटिंग देख चुके हैं, बॉलिंग भी देख चुके हैं, तो क्या उसके लिए आपने कुछ लास्ट नाइट या इससे पहले कोई होमवर्क जाके किया कि किसको किस साइड पे खिलाना है, किसको किस नंबर पे खिलाना है? क्योंकि बाज़ ऐसे लगा से हार्ड हिटर होते हैं जो जिनको आप पिछले मैचों में ओपन करवाते रहे, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ बॉलिंग बेहतर है, लिहाजा उनको हम अगर पीछे रखें तो उनसे बचा के उनसे फ़ायदा लिया है। कोई ऐसी प्लानिंग आपने जाके की या चेंजिंग की है कोई बैटिंग ऑर्डर में, या सेम कल वाली ही साइड, कल वाली नंबरिंग के पे आप? नहीं, देखिए प्लानिंग इज़ द की टू सक्सेस एनीथिंग। तो ऑफ कोर्स प्लान किया है हमने। हम साइड बाय साइड, हम मैच बाय मैच डिफरेंट साइड खिलाते हैं। कल हमने उनकी भी देखी, टोटली दिस टुडे वी विल डू टोटली डिफरेंट बिकॉज वो उधर थे, इस वजह से हमने वो बॉलिंग प्ले की जो हम आज करेंगे। वही मैं तो और हम मैच के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से अपनी साइड पिक करते हैं और आज भी हमने 2 चेंजेस किए। वही मैं क्योंकि आप तो माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और उनके अंदर भी ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि वो आपके बैट्समैनों के हिसाब से भी वो बॉलर लगाएंगे। जी जी, क्योंकि कल उन्होंने भी आपका मैच देखा है। जी जी, तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल किया है कि जाहिर सी बात है आपने भी उनके बॉलर के हिसाब से अपने बैट्समैनों को तरतीब दिया है या उसी नंबर? नहीं, हमने इस तरह नहीं किया क्योंकि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं रादर देन कि उसकी। तो हम देखेंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, हमें नहीं जानना कि कौन क्या करता है, बॉलर्स को बताना है कि आपने क्या करना। ठीक है। मेरे साथ भी 3 मिनट हैं यहाँ पे महमूद साहब, वो कुछ सवाल Khalid, great to see you. How are you? Yeah, so another day, another beautiful, by the grace of God, beautiful final, semi-final. Tell us a little bit about the coaching session with Julian Wood and how the players took benefit of that, if you could please. I think it was brilliant. First of all, next day when he met with Julian Wood, he was really impressed with the attitude from us. He was very happy and hopefully he's willing to come back next year whenever Jamaat inshallah will arrange. Otherwise the boys responded really well. We did try because you know that it's not going to change instantly. They are working on it and you can see Dalton yesterday, so a little bit coming in. So inshallah future it will work and when we will come back again so very well to this. The boys will get benefit definitely and they are, some of them I can see. Fantastic. So 2 changes to the team today. Yes. What are the changes? Usman dropped, he was off spinning. So we brought Harris, is bowling. And then second one, Rahman brought in and dropped one of the batsmen, which is Ahmed Shazad. And he fell off the side. Hopefully it will work. Shazad is not playing. Ahmed Sarfraz.
I'm surprised. I'm confused because Shahzad is a very key player, so I'm totally upset. Your answer. And in terms of, how is the season going already, and how's your coaching sessions going? So now I believe you've started an academy, right? Coaching youngsters in the UK. How can we learn a little bit more about that? At the moment, we lost first 3 games. Wow. Okay. So I didn't play last night, but it's a very high standard. The home county is Premier. It is. And also I'm a head coach of Reading Cricket Club. First things going on, which I did try to apply and get The teams are getting ready, and we really appreciate your time. We wish you the best, and our prayers are with you. So you may have heard the Canadian team there doing their final preparation. That was very vociferous, but it's been a tradition of their team. They've come from a long distance to take part in this tournament. They're in the field. They're taking the field. The officials are out there as well. So hopefully we'll bring you ball-by-ball coverage very shortly. Just bear with us 2 seconds, and we'll come back to you shortly. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016, live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016, live from London. Walking slow, walking fast. That is the cricket. If walking slow, then it will be walking fast. पता नहीं है वो गिरेंगे तो मैं बताऊंगा ये हमारे फोन में ब्लॉक हो रहा है एम्पायर को ब्लॉक हो रहा है इधर कैमरे या एम्पायर की साइड भी देना नहीं ये नहीं आएगी ये नहीं आगे वाइट बॉल चाहिए ये आगे वाइट वाइट ये आगे ठीक है अब ठीक है आपको थोड़ा सा उधर एम्पायर को साइन करना होता है नहीं एम्पायर को थोड़ा चलेगा आगे 2-3 अभी तक खड़े होंगे कितने हो यार 2 डलियां खा के So, opening batsman for the England team is facing Daud, and with Daud, number is Fazal Ahmed. So Daud is the leading England batsman in this tournament, and he will be facing the bowling of Mubarak Joya for Canada.
So we're about to start proceedings here for the semi-final. Final sort of changes by the captain, Reza. We've got a slip, a gully, a point. In comes Mubarak. First ball. Balls to Daud, and Daud clips it away through mid-wicket for a beautiful four. ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ Wonderful atmosphere here. Great support from both Canada and England. And Mubarak getting a bit of shape with a movement away from the bat. In comes Mubarak. He bowls. And a beautiful on drive. That really was a beautiful on drive there from Mubarak. Beautiful shot there. So 2 boundaries already in this. मुसाब कल की तरह जारहाना अंदाज शुरू से ही अपना लिया है दाऊद ने और लगातार 2 चौके लगाकर 8 रन का इजाफा कर दिया अपना स्टार्ट में ही दे दिए 8 रन और एक दफ़ा फिर कवर पे खेलने की कोशिश की थोड़ा सा सीधा फील्डर के पास इस दफ़ा किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए. So a lot of nerves out there. Daud started off like a train. He's hit one beautiful on drive. He's hit one through mid-wicket. And the score currently is 8 without the loss of a wicket. And we're in the first over here with Mubarak Joya coming in from the pavilion end. In comes Mubarak, bowls. And again clipped beautifully through square leg by Daud for a single. And that sort of brings the score up to 9 runs without the loss of a wicket. Mubarak Joya, right arm, medium fast, coming in from the pavilion end here at Kingston Sports University ground in Tolworth. In comes Mubarak, bowls on the leg side again, clipped by Fazal. And they'll probably come back with a misfield there. And Fazal's off the marker and up and running. So 11 runs scored from the first over. इसान इलाही आए हैं बॉलिंग पर और सामना करेंगे उनका दाऊद. पहले ओवर में 11 स्कोर बना है जो इंग्लैंड के बैट्समैन दाऊद और फजल ने कंट्रीब्यूट किया. अच्छा आगाज है इंग्लैंड की टीम की जानब से फजल और दाऊद का.
एहसान और पॉइंट की जानब खेला, एक ही रन बनेगा। अच्छा शॉट था यार। So यार सारियां गलत ही है। in comes Hassan, bowls, and a beautiful shot there. बहुत ही खूबसूरत शॉट। 2 steps down the ground, and Fazal smashes it over cover, and the ball streams to the wicket. So Fazal smashed that for a beautiful shot. Let's see how Ihsan responds. In comes Ihsan, bowls, and just dropped short. Just dropped short of the gully. That was a good response there by Ihsan. Atmosphere here is picking up quite nicely. Lots of support for Canada. And similarly, the England team are well represented as well. Beautiful setting here in the heart of Surrey in Tolworth at the Kingston Sports Ground. We've been very blessed with some beautiful weather. In comes Ihsan. And some beautiful shape there, Mubarak Saab. अच्छी बॉल ऑफ स्टंप पर रही, थोड़ा सा पिच किया उन्होंने गुड लेंथ पर, लेकिन इतनी मूवमेंट नहीं थी बॉल में। फजल समझ नहीं पाया इस बॉल पर, पूरी तरह लाइन में नहीं आए। पिच बहुत अच्छी खेल रही है अपना मिर्जा साहब। The benefit of playing here is that because it's covered with yes, that's with covers, all main right. point, yeah. और ये देखिए एक दफा फिर पूरी तरह लाइन में नहीं आ पाए फजल। सीधे बल्ले के साथ खेलना चाह रहे हैं, लेकिन Ihsan's getting some good shape on the ball. बिल्कुल, And he's just making it swing a little bit off the pitch. And I think what Fazal should be doing is he shouldn't be moving so much. He's moving quite a lot. And I think he just needs to calm down. There are nerves, obviously. It's a big game. And he just needs to get bat on ball without going for the big shot. Yeah? So Ihsan to Fazal. और इस दफा An inside edge onto his pad. दाऊद चूंकि थोड़ा सा मिर्जा साहब क्रॉस बैट से खेलते हैं, तो वो ऐसी बॉल जो ऑफ स्टंप पे पड़ती है उसको लेग के ऊपर खेलने में काफ़ी कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्लैक होल उनका बनता है। लेकिन चूंकि वो बॉल के ऊपर आ जाते हैं, पूरा लंबा बैट करके खेलते हैं, कद का भी उनका थोड़ा सा एडवांटेज है, कद भी काफ़ी लंबा है उनका। उस हिसाब से वो जो गुड लेंथ पे बॉल पड़ती है उसको वो बिल्कुल एक फुल टॉस बना के वो खेल जाते हैं। काफ़ी एडवांटेज है उनको। Do you know, I've seen a vast improvement in Daud's batting this year. That's exactly. He has been the outstanding batsman for England, and it will be interesting to see how he copes today, because it's great scoring with due respects matches in smaller matches, but this is where the big boys turn up, and this is where you really see, you know, cricket's a lot about psychology and character and temperament, and I think today will be a really good test for Daud when he faces the bowling. तल्लत है, चेंज हुआ थोड़ा सा वो बॉलिंग में थोड़ी सी तब्दीली, तल्लत को लाया गया है। दाऊद के लिए जो और अच्छी बॉल थी, गुड लेंथ पे पड़ी हुई इस बॉल को
ऑफ स्टंप पर थी थोड़ी सी, इसको पूरी तरह दिफाई अंदाज से खेले हैं दाऊद। लॉन्ग ऑन पे एक फील्डर को लिया गया है दाऊद के लिए। तलत एक दफ़ा फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप और अंपायर का इशारा कि ये वाइड बॉल है, काफ़ी बाहर थी बॉल। So the first 6 overs, the fielding restrictions apply, and the Canadian teams have chosen to have their 2 men, one at third man and one at mid-on. In comes Talat. और फर्स्ट स्लिप से होता हुआ बॉल थर्ड मैन की पोजीशन पर गया, 2 स्कोर हासिल किए। Beautiful fielding stop there. He saved 2 runs there. बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, कीपर थोड़ा सा मिस कर गए, अदरवाइज ये खतरनाक हो सकता था दाऊद के लिए। थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर रख रहे हैं, मैंने आपको जैसे पहले बताया मेरा साहब कि वो क्रॉस बैट से खेल रहे हैं और बॉलर गालबन उसको चेक कर चुका है कि ये अगर हम ऑफ स्टंप पर शार्ट पिच बॉल रखेंगे तो ये एज निकलेगा, लेकिन उसके लिए उन्होंने गलती ये की कि फर्स्ट स्लिप पर उन्होंने जो है वो बॉलिंग उस हिसाब से एग्जैक्टली उन्होंने वही की है, लेकिन गलती ये हुई है कि उन्होंने वो फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप नहीं ली। That's a beautiful shot. एक और अच्छा स्ट्रोक दाऊद का, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर। You know, you've got to have a strong character and a strong temperament, and they started off with an attacking field. They had a slip, they had a gully, and in order to move and change that so quickly, I think that was a bit of a mistake, because you saw that first ball fly through to first slip where he was, and in comes Stellet. Beautiful on drive there. और ये मिडफील्ड और 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री होता है। Beautiful on drive. He's very strong in that area. From what I've seen, he's strong at mid-on, he's strong at mid-off, and he likes to hit through the V. तलत ने बॉल गलत नहीं की, उन्होंने फील्डिंग के हिसाब से बॉल की, 1 रन बनना चाहिए था ये, लेकिन मिस फील्ड के नतीजे में 4 रन जो है 3 एक्स्ट्रा मिले हैं दाऊद को। और एक और अच्छा ऑन ड्राइव मिड विकेट पर, लेकिन इस दफा 2 रन बन पाएंगे। अच्छा रन रेट और अच्छा स्ट्राइक रेट दाऊद का। He started off in great form, and he's carried on from his form from yesterday. Talat, and some movement in the field there, and hence the reason why Daud moved away and did not take that particular delivery. So we're in the 3rd over here now today. Talat bowling from the pavilion end. In comes Talat, bowls to Daud, and that looks to be wide. Do you know, discipline in your first 6 overs is critical. We were talking about it yesterday, Mike. So if you are bowling 12 wides, for example, it becomes a 20-20, it becomes a 22 over match, not 20-20. So I think discipline needs to be key. In comes the lead. और फील्डर तैयार नहीं थे पहले, बिल्कुल भी उनको पता नहीं चला कि देखें, जो पहले मैंने आपको बात बताई कि मिर्जा साहब वही कि शॉर्ट पिच रख के वो बॉल कर रहे हैं, क्रॉस बैट से खेल रहे हैं, और वो अब भी उन्होंने ऑन साइड पे खेलने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हुए और बैट के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उस पे खेल पाए वो तो। लेकिन अगर ये फील्डर जो शॉर्ट मिड विकेट पे थे अगर तैयार रहते तो मेरा ख्याल है ये कैच हो जाता। काफी देर के बाद आपने देखा वो काफी देर के बाद वो बहुत देर से भागे। He wasn't walking in with a bowler. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, अदरवाइज ये बहुत इजी कैच था। And that was definitely an easy catch there. तो कुछ लक भी इसका मतलब है साथ दे रही है दाऊद का, अच्छे खेल के साथ साथ। I think that was Fazil who did that.
because Fazl's at the non-striker. So जी Daud बिल्कुल is बिल्कुल facing बिल्कुल now. बिल्कुल Yeah. बिल्कुल और एक उड़ता हुआ शॉट लेकिन महफूज 2 स्कोर हासिल किए हैं एहसान है बॉलर चौथे ओवर का खेल जारी है 33 स्कोर है और ये देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा क्योंकि उनके ट्विस्ट हुआ है उनका घुटना और काफ़ी तकलीफ महसूस कर रहे हैं एहसान So the doctors are on the pitch. It looked to me like he lost his footing there. And because the ground is pretty hard with covers on. And he might have just twisted his ankle there. I don't think that's too dangerous. I think it's the surface is very, very hard because it's been under covers, and it's just down to footwear and perhaps just missing. Sorry, कहता यार मैं की करूं So just a short lull in proceedings here as unfortunately the Canadian bowler came into bowl and just twisted his ankle. He's in good hands. There are two fully qualified medical doctors with him at the moment administering first aid, and hopefully we should get going fairly shortly. So thankfully, the bowler is back up and game. It's funny what the magic cold spray does, and thankfully he's up and on his feet, which is good to see. So thankfully the bowler is okay and will resume play with the score at 34 in 3 overs for the loss of no wicket. The batsman on strike is Daud.
And he clips that away to square leg, which is fielded by the Canadian fielder, and it's only a single. That's a beautiful shot there by Daud. And that really is his hitting area. You can't put fielders there. Straight back over the bowler's head, and a beautiful shot there for 4 runs. So that started off like a train, and another 4 runs to him. Brings the score up to 39 in 3 overs. Small modifications in the field here. Mid-on going wider. We now have a deep mid-off. And that's cricket down to mid-wicket for another boundary. So Daud started off like a train here. Score goes up to 43. Daud looking pretty ominous here. 43 runs now. He scored 135 in the quarterfinals yesterday. That's just stand to be corrected there. That was Fazal who hit those last 2 boundaries. Beautiful trademark shots. One was a straight drive over the bowler's head, and then the second one was through mid-wicket. So Fazal facing Fazal Ahmed plays that defensively to cover, and the score after 4 overs is 43 without the loss of a wicket. So 43 after 4 overs. Become a bit more chillier here, and we noticed the variations of weather. It was beautiful sunshine. Umpires signalling to the scorers. So Canada's international player Raza Rahman, the captain of the Canadian team, to come on, and I think, you know, a good choice there. Slows the ball down, and a beautiful start there. Completely bamboozled Daud, who hit across the line. So needed some kind of change, and Raza did it himself as captain, brought himself on. Quite a bold move, especially in the power play in the first 6 overs, to put a spinner on. But Daud
adapts quickly and carries on his ominous form, hitting that through square leg for another boundary to take the score up to 47. In comes Raza, bowls, quicker, flatter ball there. Signalled a wide by the umpire, takes it up to 48. So in comes Raza, bowls to Daud. Much quicker delivery. Bowling, I notice whereas earlier he was giving it flight, he's bowling it a lot more quicker now. That's in the air. One bounce. And it's gone for 4. That was a trademark Fazal Daud shot. Straight back over the bowler's head. Takes the score up to 51. There's only one wide. 47 to 48 होया थी ना चौका हो जाए. Takes the score up to 52. 52 ही है, मैं तो 52 थी. And now it's up to 53. Beautiful square cut there by Daud. So Fazal now facing for the first time. Raza the bowler. 2 clicks there. And quite rightly so, that was not deemed to be a bye, but inside edge onto the pads and another single. Takes the score up to 54 after 5 overs. And one more over to go with the power play. So England have started off really well here, 54 in the first 5 overs with 53 changes. 54. And the officials have quite rightly just corrected the scorers, and it's 53 after 5 overs. So अभी स्कोर हुआ है 53 और बैट्समैन है फजल अहमद, वो स्ट्राइक ले रहे हैं. It'll be interesting to see if he got anything onto that. But yes, a little tickle, little tickle. Sorry. And that's and that's another 4 there to Fazal. I think again, if the first slip had been there, that could have been taken by the relevant catchers. Good cricket there, Fazal. Scores the boundary, gets off strike, and good sensible cricket here by the England team. I think I've seen 2 catches now which have gone to first slip, and it's about having faith in your bowlers in those first 6 overs. So that is played back to the bowler.
Canadian team here. Rejuvenated with that dot ball. Every dot ball is critical in 2020. That's a beautiful on drive. And through the fielder's legs, unfortunately. And another 4 there. To Fazal. Sorry, to Daud. Daud is the one who hit the 4. Daud is number 32. Fazal is number 34 on his back. For viewers who are looking. जो लोग देख रहे हैं वो दाऊद नंबर 32 है और फजल 34 है और फुल टॉस फिर चौका बहुत खूबसूरत से सीधा फजल अहमद ने मारा. Daud has gone on to 43 in 6 overs, which is great striking. Down the leg side, off the pad, and good comeback there. So if you are watching this, please do tweet us and let us know, and we'll tweet your message live on air. It's at Majlis-e-Sehat, MAJLISESEHAT, and played quite intelligently to cover, no runs. Another good over there for the UK. The score now is 67 after 6 overs, and so now the field restrictions in the power play are relieved. So अभी और लोग आ रहे हैं दोस्त यहाँ हमारे जर्मन से आ रहे हैं टीमें और मुख्तलिफ कंट्रीज से, नॉर्वे से, फिनलैंड से, और क्राउड अभी थोड़ा बेहतर हो रहा है. इंशाल्लाह आज 2 बजे हम फाइनल दिखाएंगे और तकरीबन 1000 लोग वहाँ होंगे. So in the first 6 overs they have scored 67, and Canadian team just need to now, it's a long way to go in this game, and I think they just need their captain Raza to just bring some kind of calmness to proceedings, because England have started off with a flyer here, but T20 can change so quickly that we've got that's the beauty about the game. There's a long way to go yet. So batsman facing number 32 is Fazal Ahmed. Number 34 is Daud. Daud is currently on 43 in the first 6 overs. Raza is the bowler, captain of the England team. In comes of the Canadian team, Raza. Much beautiful ball. I thought that was a much better ball. Good flight, brought the ball back in. Classic off break for a leg spinner, for an off break bowler. That's in the air. And the first wicket goes. So Fazal is caught at mid-off, having given his team an exceptional start here. Fazal Ahmed is the batsman out. And he will be replaced by Zishan Nasir.
incoming batsman. Number 7 is Zishan Nasir. So Zishan scored a 50 here yesterday in the quarterfinals against Switzerland. So Raza breaks through and takes the first wicket. And Zishan, because the batsman crossed, will not be facing. Daud will be facing. And that's a beautiful shot there by Daud to get off the mark again. Takes it up to cover, and for the first time now, Zishan Nasir will be facing. So the bowler here is Raza Rahman, left arm orthodox off break. And I think the batsman was not ready and quite rightly moved away. In comes Raza, bowls. Quicker ball. And going down the leg side. So Raza rejuvenated after that wicket and bowling quite beautifully here. Plays for the Canadian national team. Left arm over. And it's been a good over so far. He's taken a wicket and only a single off it. So a great contest there. Quicker ball, much quicker, right in the block hole. And an exceptional over there. Only a single off it, and also the loss of the first wicket, the England wicket. So the score goes up to 68 for 1 after 7 overs. A change in the bowling here, and the new bowler is Sikandar for Canada, bowling from the pavilion end. And Sikandar Zubair is the new bowler. And he did really well there, so Daud was very lucky that that didn't carry. Sikandar is the bowler. Completely deceived Daud in the flight there and in the pace.
Zishan facing Sikandar. And quite cleverly, he just hit that straight to cover. It takes time to get into the... England had got off to such a good start that taking that extra bit of time is fine. And 2 runs in the over to date. I think that's what they've got to do. They've got to just keep ticking over the scoreboard. They've got off to such a good flyer that if they can just keep ticking over the scoreboard. Sikandar to Daud. And a huge wind up there, but didn't connect. And 3 runs off 4 balls. So Sikandar doing a good job here for his team. In comes Sikandar. Bowls. And Zishan just never got hold of that. He never did. He never looked in control of it. And a very good over there by Sikandar. Which Sikandar Zubair, which netted 4 runs. And the score is 72 after 7 overs. After 8 overs. So here is a change in bowling. It looks like Mahmood is the new bowler. And coming on to bowl for the 9th over of the day today. So my fellow co-name Mahmood is coming on to bowl. He'll be the 5th bowler. So in comes Mahmood, bowling off breaks. The first one is hit down to deep square leg for a single by Zishan. तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है इनको अभी। हाँ जी वो सब काफ़ी बेहतर खेल पेश किया है आज। फजल आउट हुए हैं जी। और अब महमूद आ गया। इन लोगों ने ना पिछली 2 ओवरों में ना जो स्पिनर्स डालने हैं ना उसके साथ ना बहुत फ़र्क पड़ा है। रज़ा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, विकेट फजल की ली है। अब एक और स्पिनर आ गया। अब दाऊद ने बहुत बेहतरीन छक्का मार दिया है स्क्वायर लेग के ऊपर सीधा। पीछे गेंद गिरी थी मोमो सर जी। और ये दाऊद की 50 है। कल इसने 130 किए थे। 135 अच्छा। So following 130 yesterday, 50 today from Daud. उनासी है मजमूई स्कोर इंग्लैंड का। एक खिलाड़ी फजल आउट हुए हैं। मुबारक साहब, आपने जैसे ये देखा आज सुबह, आपके अंदाजे में कनाडा के बॉलर्स कहाँ गलत किए हैं उन लोगों ने? मोमो साहब बात पता क्या है, प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और हमेशा जो प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो जो पिछला
कारकर्दगी होती है किसी भी प्लेयर की जो डेंजरस साबित हो सकता है मुखालिफ टीम का प्लेयर, उसको घर पे बैठ के वो उसकी वीडियोस देखते हैं या उस पर बात करते हैं कम अज़ कम के। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैप्टन जो होता है या कोच बाहर टीम का मैनेजर है, वो उसने ये देखना होता है कि कौन सा प्लेयर किस एंगल पर खेलता है और कि उसका तर्ज़ अमल क्या है खेलने का। तो उस हिसाब से वो अपनी टीम को जो है वो कोच करता है, वो ट्रेन करता है उसको कि उसका एंगल, उसका जो वो आप देखें दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका कोई ना कोई वीक पॉइंट और कोई ना कोई लूज शॉट ना हो, और वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि हमने इस प्लेयर को यहाँ पे पकड़ना है। जैसे सईद अनवर को आप देखें, वो फ्लिक पे पकड़ लेते थे, फ्लिक उसका फेवरेट शॉट था, हालांकि उसके बावजूद वो उसको वहाँ फील्डर लेके लूज बॉल करके उसको पकड़ लेते थे, वहाँ पॉइंट पे उसको उसका था थोड़ा सा, वो वहाँ पे उसको कैच लेते थे। जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके पास भी ऐसी कोई चीज़ उनको होती है जो उनका लूज पॉइंट होती है, तो उसके हिसाब से टीम को ट्रेन किया जाता है। So Mahmood is the bowler, back to Daud. And the score is 79 for the loss of 1 wicket. And we're in the 8th over. अच्छा शॉट, गैप शॉट है, 4 रन हो, फील्डर गेंद रोकने में कामयाब हुए, 2 स्कोर हासिल किए हैं दाऊद ने। It was a beautiful shot all the way along the ground through extra cover. And another 2 for Daud. और अच्छा स्वीप शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, 1 रन, लेकिन बहुत अच्छी शॉट कलेक्शन दाऊद। I think England are well positioned here, 82 after 9 overs, a strike rate of over 9 and over. जी बिल्कुल। And normally थोड़ा सा कम हुआ है दोस्तों 6 ओवर के बाद, क्योंकि फील्डिंग थोड़ी सी आउट ऑफ द सर्कल गई है, तो कुछ अदरवाइज 12-13 का एवरेज जा रहा था। जी स्पिनर्स ने बहुत फर्क पड़ा। अच्छा शॉट, स्ट्रेट शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, 1 रन हासिल किया दाऊद ने। And the bowler is Sikandar Zubair. अच्छे बॉलर हैं। He's bowling off breaks, I think, mostly. Yeah. I think it's so important in each of these games that your fielding side supports the bowlers, and we've seen a couple of instances this morning where literally the ball's gone through the fielders. और एक उठता हुआ शॉट, लेकिन फर्स्ट स्लिप पे खड़े हुए फील्डर ने सही जज नहीं किया बॉल को और मूव नहीं हुए। जी, और जिशान नसीर अच्छा खेल रहा है। अच्छी शॉट, बल्ले का बाहरी किनारा लिया था इस बॉल पे महबूब साहब जी बॉल ने, और he used the pace of the ball and managed to hit it a top edge over gully. 4 रन मिले हैं and got 4 runs for it. और बोल्ड कर दिया है जीशान को, काफ़ी ब्लैक होल बनाया था महमूद साहब। देखें ये भी क्रॉस बैट से खेले हैं और काफ़ी गैप बना लिया पैड और बैट के दरमियान। यही मैं आपको कह रहा था कि ये जो चीज़ है बॉलर को जब चेक कर लेता है तो वो काफ़ी हद तक कामयाब बॉलर रहता है। The spinners have definitely changed the match a bit, and कैसर हैं नए बैट्समैन। to give our viewers a bit of background to Kasser, Kasser is playing for Reading as well this year with Khalid Zafar. He formerly played for
the civil service in Pakistan, and he also had the honour of scoring 100 against Shoaib Akhtar when he was at his peak. So wicket-keeper batsman Yasser Mahmood is the next batsman in for the England team. So England now are 87 for 2 after 9 overs. The other thing I've noticed, Mubarak Saab, is it's become a bit colder and the sun's gone in a little bit. And I think that has an effect on proceedings as well. When the sun is out, it's batsman's paradise. मुसाफ क्रिकेट की हिस्ट्री जो है वो अपनी जमात अहमदिया में बड़ी पुरानी है। ये असल में नेशनल लेवल पे जब स्टार्ट किया गया इसको, तो पाकिस्तान में शायद आपको इल्म होगा कि सर ज़फ़रुल्लाह खान क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से एक टूर्नामेंट शुरू हुआ सिंध में। तो उस वक़्त पहले वो ज़िली लेवल पे उसको शुरू किया गया, उसके बाद नेशनल लेवल पे वो उसको फैलाया गया। फिर पूरे पाकिस्तान में जो सारी टीमें, वहाँ रवा की काफ़ी टीमें आती थीं और उनमें कराची की बेहतरीन टीमें, कराची की बड़ी अच्छी टीमें थीं। माशाल्लाह वो टूर्नामेंट बहुत ही कामयाब टूर्नामेंट है। उसके बाद आज देखें कि अल्लाह के फजल से इस मुकाम पर जमात में क्रिकेट की तरक्की हुई है कि इंटरनेशनल लेवल जो है वो आज सारी दुनिया से मुल्क जो हैं यहाँ पे आके क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरी दुनिया में लोग बैठ के ये मैच देख रहे हैं। It's a real blessing, you know, from those early days to where we have come today with that team. और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि वहाँ सर ज़फ़रुल्लाह खान क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ करता था, उसके काफ़ी प्लेयर यहाँ आज भी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। And for our viewers, Mubarak Saab has just commented on the initial tournament by Chaudhry Zafrullah Khan Saab, who initiated a cricket tournament in Pakistan. And some of the players who were playing in that tournament are present and playing in this tournament today. And it's great to see teams from USA, from Canada, from Germany, from Norway, from the UAE, all come together to London, over 8 venues to take part in this tournament. So change of ends. स्ट्रेट शॉट, कोई मौका नहीं है फील्डर को ये बॉल रोक सके। 4 रन। दाऊद थे बैट्समैन। एंड चेंज हो चुका है 10 ओवर के बाद। और एक और अच्छा गैप शॉट, 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। So Daud has really started off like a train. He's just gone from strength to strength after hitting a 50. He's hit 2 consecutive boundaries there, and he really is tearing the bowling apart here today. It's a test of character here for Mahmood, who's the bowler. In comes Mahmood, bowls to Daud. Beautiful on drive, just for a single this time. कैसर पहली बॉल का सामना करेंगे महमूद की। बाहर निकलकर एक बहुत ही खूबसूरत शॉट खेला है। That's smashes that for 6. 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। Beautiful shot. And please tweet us with your comments. The score now is 99. So yes, it's actually gone above that. The score is 102 for 2 after 10 overs. That's a beautiful shot there. Great use of the feet. Got to the pitch of the delivery, and Gasser dispatched that over mid wicket for a
Humongous six. बहुत खूबसूरत शॉट. Gasser facing Mahmood. Quicker और ball. इसको पॉइंट और गली के दरमियान खेलना चाहते थे, कट शॉट, लेकिन कामयाब नहीं हुए. So in comes Mahmood, bowls to Gasser. एक स्कोर लेने में कामयाब कैसर. What's really good about this England team so far that I've witnessed, all right, and I was asked today about my prediction before any of the games started, and I explained, and I said, I feel today's final will be between England and Umair. बिल्कुल ठीक. That is my prediction. All right? अच्छा, आपका था ये. And that was my prediction. उमर और England. इंग्लैंड खेलेंगे. And I feel England will win the tournament. That is my. देखते हैं. Yes. What's your prediction? आपका क्या है? देखें, ये तो क्रिकेट है और आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता. क्रिकेट के बारे में तो आप भी देखें, आखिरी बॉल तक कुछ कहा नहीं जा सकता. But Mubarak, what you have to do is you have to come on. You can't put your. आप अंदाजा लगा सकते हैं. Give me your idea. अंदाजा अगर आप कहें कि अंदाजा ये है कि इंग्लैंड की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, और वहाँ उमैर आपकी बात ठीक है, उमैर की पोजीशन अच्छी है. Yes. तो and Umair's got some good players. They've got some good players as well. I've looked at their team. They've got Abdul Aziz. They've got Abid. They've got Lake. You know, that's a strong side there. That's a very strong side there with Umair as well. Fawad है, Freed है, और डोगर है लड़का एक. Correct. मुदस्सर डोगर. Yes. अच्छे प्लेयर्स हैं उनमें, लेकिन मेरा ख्याल अगर कंपेयर टू इंग्लैंड टीम तो वो काफ़ी फ़र्क है उनमें और इनमें. So Gasser quite sensibly, after hitting that six, keeps rotating the strike, and that's the key in 2020. Get your boundary, get your singles, and keep rotating the strike. Gasser is so lucky there. Do you know that in the World Cup? I've seen that happen so many times, Mike Sub, that the batsman hits it, the fielder fields it, and it gets onto the stump. But luckily, he was in today. और मिस किया वाइड बॉल. A bit harsh there, I felt. Yes. Yeah. Both, it was very close. It was very close. But you know, the umpires have a line there, and they have to adhere to that line. And और ये बहुत ही अच्छा शॉट. That is just a huge लंबा छक्का. Huge hit. And hopefully you can hear some of those chants there in the background. So the England team quite buoyed on by that big six by Daud. Zubair, the bowler. And I think that's where you've got to focus on him. You've got to either pitch it on full at leg, or you've got to bowl it wider. Anything on the stumps, and Daud has just been absolutely ruthless. और एक और अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, देखते हैं एक ही रन बनेगा. Beautiful arm there by the Canadian return. बिल्कुल. Right on the penny there. Great, good cricket by the Canadian team there. So the score is 112 for 2 after 11 overs. Gasser missed out there. Missed किया ये बॉल. बारिश का तुसी भी इधर आ जाओ शायद. वो स्कोर दा ना वो फिर इधर आ जाओ. So Mark, how do you think the game's spanning now? Is it
Can the Canadian drag it back? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो जिस लहज पर अब ले जा चुके हैं ये बैट्समैन, और उसके बाद जो आने वाले बैट्समैन हैं उनका लेवल भी कुछ इसी तरह का है जो ये खेल रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि कोई अनहोनी ऐसी जब जैसे कि हैट्रिक हो जाती है या वो, तो क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अंदाज़न ये कहा जा सकता है कि इस वक्त जो इंग्लैंड की स्कोरिंग पोजीशन है या बैटिंग पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग जा रही है। And we've got Canada's national player, और एक और Razak Rahman, but Daud has taken. दाऊद जो है वो काफ़ी जारहाना खेल पेश कर रहे हैं। That was a beautiful shot. बहुत ही खूबसूरत shot। For Canada. यस, ये नेशनल टीम में खेलते हैं और बहुत अच्छे मंजे हुए बैट्समैन और बॉलर हैं। It's a beautiful shot there, absolutely beautiful. The sun's come back out again, which is nice to see. So in comes Reza. Bowls to Daud. And he flat bats that straight back over his head. What a shot! Superb hitting. A 6 degrees. And it looks like Daud is just on fire here. It reminds me a little bit about Chris Gale. Starts hitting the ball, he's been phenomenal. Some huge sixes we've seen from him. Daud is the batsman, and on the non-striker we have Gassan Mahmood. मोहम्मद साहब 19 स्कोर चाहिए दाऊद को अपनी सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। कल भी इन्होंने बड़ी खूबसूरत इनिंग खेली थी और 100 मेरे ख्याल 33 स्कोर इन्होंने किया था, तो और नॉट आउट गए थे, बैट केयर किया इन्होंने, बहुत अच्छी इनिंग कल खेल के गए हैं। अच्छा कट शॉट, एक ही रन बन पाएगा। 82 ज़ाती स्कोर दाऊद का। कैसर हैं उनके साथ बैट्समैन, बहुत ही जारहाना खेल पेश कर रहे हैं। 13वें ओवर का खेल जारी है, 123 स्कोर है। So it's great to see an international player from Razak. It's great to see a former first-class player, Gasser. Right? It just goes to show you the pedigree of this tournament. Each year we've got new players coming through, and some good quality as well. और एक अच्छा शॉट, स्विप शॉट दाऊद का। 86 है ज़ाती स्कोर दाऊद का इस चौके के साथ। The score it goes up to 128 for 2 after 12 overs. And this isn't what you want from your skipper. You want your skipper leading from the front. And I felt he has perhaps not bowled, to his best capabilities. That's great. But when Daud is seeing it like a football, it's very hard to bowl to. Any bowler would have that kind of problem. ग्राउंड के चारों तरफ महमूद साहब शॉट खेले हैं दाऊद ने। Some beautiful shots. बहुत अच्छा खेल पेश कर रहे हैं दाऊद, और उनका साथ निभा रहे हैं कैसर। इंग्लैंड की टीम की क़यादत भी कर चुके हैं कैसर। आज ये सेमीफाइनल हम आपको दिखा रहे हैं कनाडा और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, और दूसरा सेमीफाइनल जो इस वक्त जारी है हमारे साथ वाली ग्राउंड में, अमेर 11 और यूके इंग्लैंड ए के दरमियान।
So the first ball there was a wide. Need to be disciplined. They need to still think that somewhere they're going to have a very good over. They'll let the bowler. और एक लंबा शॉट खेलने गए थे, थोड़ा सा बॉल ऑफ स्टंप पर रही, मिडिल स्टंप से थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ बॉल गई और उसको पूरी तरह जज नहीं कर पाए दाऊद. Quite correctly so, Gasser just using his experience, just having a word there with Daud to say, you know, it's a long way to go here yet still, and the ball will come, all right? So Talat to Daud. और उसका हुआ शॉट देखना ये है कि ये बाउंड्री से बाहर जाएगा कि नहीं, और इसके साथ ये 4 रन्स over extra cover. ओवर एक्स्ट्रा कवर. अच्छा शॉट. 90 है स्कोर दाऊद का. He's on 90 now. 90 on 90. Right. So So Daud just 10 run behind his century. beautiful century. Following on from his century yesterday in the Yes. quarter-final, he seems to be in really good form. और ये उठता हुआ शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, और इस तरह दाऊद ने We put the mockers on him. एक अच्छी इनिंग खेली दाऊद ने, और 90 के स्कोर पर आउट हुए हैं. Great to see the camaraderie सिर्फ there. 10 रन चाहिए थे उनको अपनी. मेरा ख्याल महमूद साहब उनको अगर वो थोड़ा सा इसको कैरी करते आराम से तो बेहतर था, क्योंकि सेंचुरी के लिए जाना चाहिए था उनको. लेकिन मेरा ख्याल वो टीम के लिए खेले हैं तो वो ज़्यादा अप्रिशिएटेड है कि उनको ज़्यादा दाद मिलनी चाहिए. उन्होंने अपनी इनिंग की ख्याल नहीं किया, बल्कि टीम के लिए उन्होंने एफर्ट किया, और वो टीम के लिए ही उन्होंने आखिरी शॉट तक खेला. 92 है स्कोर दाऊद का. अभी जो आउट होके आए हैं प्लेयर्स, दाऊद 92 स्कोर. 8 रन से सिर्फ उनकी सेंचुरी जो है वो पीछे थी.
कि बॉलर ने बड़ी मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए खुद ही फील्ड किया है बॉल को और 1 रन ही बन पाया। Zafar facing, ball just short of a length, beat him for pace there, and at the end of the 14th over, the score is 130. Okay, it's 140. The score is 140. 140. काफी धूप है 140 है 140 अपना महमूद साहब, इसलिए मैंने भी ग्लासेस किसी के ले लिए हैं अपनी गाड़ी में तो नहीं थे। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। जज़ाकल्लाह, मेरा ख्याल रंग तो उसका मिल गया है मेरे सूट के साथ। अब अच्छे लगे या ना लगे, लग रहा है कि आप सेट होकर आए हैं इसलिए आते हैं। नहीं अब अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन धूप से बचत जरूर हो गई है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सीफ सामना करेंगे। Bowler is Talat, तलब medium right arm fast. अच्छी बॉलिंग की है अभी तक तो तलब ने, और बहुत ही खूबसूरत यॉक करने की कोशिश की, कामयाब रहे। थोड़ा सा लेग स्टंप मिस कर गई, अदरवाइज काफ़ी ख़तरनाक थी ये। ब्लैक होल बनाया कुछ, आगे निकले, क्रॉस बॉल बैट से खेलने की कोशिश की। I don't think they're bold enough to deliveries like that. That was a leg stump Yorker, and it's so hard to get It's underneath very the difficult ball. to play, yeah, that's right, yeah. So good bowling there. Let's see how the Seif responds. और ये आप देखें वैरायटी, और बहुत खूबसूरत बॉल आप मिडिल स्टंप से बाहर आई है, और एक स्लो बॉल उन्होंने कामयाब रहे उसके ऊपर। वो It was almost like a leg break. बिल्कुल, Yeah, he bowled there, slow ball. So great deliveries there. Good variation. A Yorker followed up by a slow ball. In comes Talat, balls to Seif. और एक और अच्छी बॉल, बहुत खूबसूरत। Bit of a mishap there. बिल्कुल But बिल्कुल। thankfully nobody's hurt, and the bowler felt his fielders could have supported him a little bit better. बिल्कुल। But then it's bowling well. I mean, you look what he's bowled. He's bowled a Yorker, he's bowled a slow ball, he's bowled a short pitch delivery. Beautiful bowling. और एक उठा हुआ शॉट, और जाफर सीधा फील्डर के हाथ में, और आउट होकर जाफर जो है वो वापस। But you know, this is the beauty of 2020. You see how the game is changing and evolving. England are still in a very strong position with 5 overs to go at 151, but it's a test of character here now. It's who can hold their nerves, who can play the innings on the day, and take the pressure of a big semi-final. बिल्कुल। So this is day 4 of our tournament. जी जी। We're broadcasting to you live and direct from the Kingston Sports Ground here in sunny Tolworth in Kingston in Surrey, and we've been blessed with a beautiful day here today. बिल्कुल, आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, और काफ़ी अच्छा कम बैक किया है अपना कनाडा ने। यह के बाद दीगरे 3 विकेट्स हासिल, 4 विकेट्स बल्कि बैक टू बैक हासिल की हैं उन्होंने। तो मेरा ख्याल है काफ़ी फ़र्क पड़ेगा रन रेट पर इसका।
शहजाद हैं लेफ्ट हैंडर, नए बैट्समैन बड़े ही अच्छी बैटिंग करते हैं, सीधे बल्ले के साथ ज़्यादा खेलते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ वो अपना कैसा खेल पेश करते हैं। दफाई अंदाज से खेले, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, पहले ही बॉल पर 2 रन हासिल किए हैं शहजाद ने। बड़े ही तेज़ और मुस्तनद बैट्समैन हैं शहजाद और ये ममूसा मेरे ही टीम में खेलते हैं शेफील्ड क्रिकेट क्लब में और मेरी टीम में ये मेरे साथ ओपन करते हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और एक बेहतरीन एथलीट भी हैं। That's what it takes these days. It's not just about your batting. Yeah. In 2020, you've got to be an athlete. और बैक टू द बॉलर, थोड़ा सा पिच था लेकिन मिस फील्ड हुई। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन शहजाद ने मना किया कि बॉलर एंड पर थोड़ा सा खतरा हो सकता है रन आउट का, इसलिए उन्होंने फिर वो रन लेने का रिस्क नहीं लिया। And we've just received a best wishes messages from Tayyib Abbas from Egham, who he's saying he's enjoying our stream and watching this match with interest and wishes both teams the best for today's semi-final and final. हाँ जी। So thank you Tayyib Abbas sahab for texting us. और इसी तरह बेल्जियम से राना वो भी मैच देख रहे हैं और अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। बरकतुल्ला साहब हैं दुबई से, वो भी मैच देख रहे हैं और वो भी मैसेजेस भेज रहे हैं। और अखलाक अहमद साहब पिछले साल काफ़ी उन्होंने पाकिस्तान से है, जर्मनी आ गए हैं। ओह अच्छा, माशाल्लाह। वो भी देख रहे हैं ये मैच। जर्मनी में काफ़ी हमारे दोस्त इस वक्त बैठ के मैच देख रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल मैच देखने में ज़्यादा बिजी हैं। उन्होंने अभी तक ना तो कोई ट्वीट किया है और ना ही हमें डायरेक्टली कोई मैसेज किया है जी। और अखलाक साहब भी आज मुझे लगता है सोए हुए हैं। नहीं, मैच तो ज़रूर देख रहे होंगे। अच्छा, तो अखलाक साहब अगर आप देख रहे हैं तो हमें प्लीज़ बताएं कि कैसे स्ट्रीमिंग जा रही है और कैसे मैच जा रहा है। पाकिस्तान में है अपना नवाबशाह से आए हैं मैसेज, वहाँ तारिक साहब हैं जो PST साइड में मैनेजर हैं गालिबन वहाँ पे, तो वो भी ट्वीट करते हैं और अपना मैसेज करते हैं वहाँ से मैच देखने के लिए। हमसे काफ़ी बाहर और बाहर का इशारा कि ये वाइड बॉल है। I think this is the beauty about the England side as well. They bat right down to number 9. Very strong in their batting. वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग नंबर है इनके। So Shahzad facing here. Beautiful shot. और बहुत खूबसूरत रनिंग, बहुत खूबसूरत रनिंग कैसी है सब। I mean, you know, unbelievable ये रन नहीं था। You can see that even the fielding there, that the national players, जी बिल्कुल, when they field the ball, it's on a different बहुत मुश्किल है इतना मतलब क्लोज रन लेना ये। और दोनों यंग प्लेयर हैं असल में इस वक्त। तौसीफ जो है वो भी काफ़ी एथलेटिकल अगर नज़र से देखें तो काफ़ी अच्छा है, उसकी फिज़ीक बहुत अच्छी है। But I also have to compliment the Canadian fielders because that ball was travelling. He picked it up with one hand, shied at the stumps. बिल्कुल। Right. और बैकअप कितना खूबसूरत है। The backing up is beautiful. So the Canadian team well built, great contest. We will give viewers an update during the break on proceedings in the other game, which is in the adjacent ground. और एक उठता हुआ शॉट तौसीफ ने, बहुत ही पुअर शॉट था ये, पीछे हट के सीधे बॉल को उन्होंने क्रॉस बैट से खेला है और वो बैट का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उसको मिडल नहीं कर पाए। I think what it is though is Talat is bowled well. In the last over, if you remember,
Yorker, slow ball, short length ball, yeah, and you've got to give credit to the bowler there. Right? Talat is bowling well. मेरा ख्याल है आप कोच को या कैप्टन को इनको ये कहना चाहिए कि सिंगल और डबल पे डिपेंड ज़्यादा करें क्योंकि इनका स्कोर जो है ओवर 10 ओवर पर Well, the captain is going in now, so और खालिद जफर साहब खुद जा रहे हैं so तो मेरा ख्याल अगर अब ये सिंगल डबल पे ज़्यादा इंतज़ार करते तो अब इनका स्टेबल रहता है ये स्कोर सारा 10 रन से ऊपर एवरेज थी और अब 16 ओवर पे है जो 166 मैं देखता हूँ 100 So for our viewers today, 146 Khalid Zafar is a former first-class player in Pakistan. He's the current overseas player for Reading Cricket Club. He's captained the England team in the last 3 tournaments, which England have fortunately won. So he's got great pedigree and a true captain who leads his team by example. And he's playing for Reading in the Premier League of the Home Counties League. So for those of you who played in that, that's an exceptionally high league here in the UK. So Khalid will be facing Talat, national bowler for Canada, against the UK's captain. First ball down the leg side, and it's deemed to be a wide. So could you tell me a little bit about cricket in Yorkshire? What is the top Premier League in Yorkshire? यॉर्कशायर में आपको पता है कि यॉर्कशायर की क्रिकेट पूरी दुनिया में मशहूर है और असल में तरीकाकार ये है कि छोटे लेवल पे जो लीग्स लोकल लेवल पे होती हैं सिटी लेवल पे उसमें से वो पिकअप करते हैं लड़के और क्योंकि हर लीग की जो इन नेट पे वो डाल देते हैं हर चीज़ बॉलर की एवरेज बैटिंग की एवरेज रेट्स सारे वहाँ पे आ जाते हैं तो वहाँ से फिर वो जो है रीजन की लीग्स जो हैं वो उनको पिकअप करती हैं तो वहाँ से फिर वो लड़के जो है एक टीम निकल के जो है वो एक साइड पे हो जाती है तो यॉर्कशायर की मेरा ख्याल लंकाशायर से अगर बाद में आप काउंटी देखते हैं तो वो यॉर्कशायर है सबसे अच्छी अब तक जो है वो लंकाशायर ही है और उसके बाद जो है वो यॉर्कशायर में एक बड़ी बेहतरीन टीमें जो हैं वो क्रिकेट खेलती हैं They're listening to you now and they're taking singles. So it's good to see that the captains listen to you and he's just now making sure they're taking singles. मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रेटजी ये अगर रखेंगे तो बेहतरीन रहेगा इनके लिए क्योंकि अब शॉट्स पे ये देखिए ना अब गैप शॉट खेला है यहाँ इनको 2 रन्स मिल गए हैं अगर ये 4 और 6 के लिए जाएंगे तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा By Khalid, 3 points. Number 1, leading from the front, the captain, 0-1. Khalid Zafar is facing Talat. लेकिन कैप्टन के साथ कितनी ज्यादती है कि पूरा 1 नंबर भी नहीं दिया 0-1 उसको So Talat the bowler and Khalid the batsman. और एक और गैप शॉट बहुत ही खूबसूरत प्लेसमेंट Great cricket here. ये असल गेम ये है मूसा इसके बारे में आपको शुरू से मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना सिंगल डबल्स ये मैच का पासा पलट देती हैं बिल्कुल सही है लेकिन हमारे जो लेवल के या इस लेवल के प्लेयर्स हैं वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि 6 और 4 ही जो है वो क्रिकेट का मेन हिस्सा है ठीक है 6 और 4 होने चाहिए लेकिन जब वो मिलें उस लेवल का आपको बॉल मिलता है 152 152 है स्कोर 152 इंग्लैंड का और 17 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं I think they need 180 that's my assessment of today. हाँ जी बिल्कुल क्योंकि 170 से ऊपर जो है वो इनको विनिंग की तरफ लेके जाएंगे So it's a beautiful ground. Conditions are ideal for batting, I would say. It favours. And so it would be great to see some of the Canadian national team players. 2 of them are in this team. Raza Rahman is one of them. And it'll be a good contest. Yeah.
And what we will try and do for our viewers is we'll try and bring Daud, who scored that scintillating 90, and give him his thoughts on how he found the innings today in comparison to yesterday. So it looks like Reza's brought himself back on, the skipper. Reza Rahman, slow left arm round the wicket. और अच्छा लेग कर्जल खालिद जफर का Use the pace of the ball. 3 स्कोर हासिल किए हैं खूबसूरत शॉट पर Khalid really बहुत late खूबसूरत cut. बहुत खूबसूरत Beautiful शॉट shot. Late cut. ये ओवर की पहली बॉल पे 3 स्कोर हासिल कर लिए हैं अब जो प्रेशर है वो सारा बॉलर पे चला गया I think Shazad needs to get on with it. शहजाद बहुत प्यारा Because what you've got is you've got फ्रंट skipper. फुट पे जाके खेलते हैं और पूरा बैट लेके जाते हैं और बहुत अच्छे शॉट कलेक्शन With 3 overs to go and 17 balls now, I think Khalid will nurture it round, but at the other end, Shazad needs to go. शहजाद का आप स्टाइल देख He needs to go लें for खेलने it. का Let's see. और बहुत प्यारा अंदाज है खेलने का ये देखिए Reza. पूरा बॉल के ऊपर जाके थोड़ा सा राइज हुआ है बॉल मिडिल स्टंप से Reza's a canny bowler. You don't get to play for your national team, for no reason whatsoever. But you saw what Daud did to him today. He had the better of him today. दाऊद ने Had the साबित better कर of दिया him today, yeah. And it'll be interesting to see what tactics should. और बाहर निकल के शहजाद ने ये Beautiful देखें shot. कैसा बेहतरीन शॉट खेला है Straight over. ये मैं आपको बता रहा था कि ये क्वालिटी है इस लड़के में शहजाद डाउन द ट्रैक गए और बहुत ही खूबसूरत mid-wicket six. शॉट खेला है Beautiful mid-wicket. मिड विकेट के ऊपर से काफी लंबा छक्का मारा है Strong lad. I interviewed him earlier on और today. देखिए पूरे स्ट्रेट बैट से उसको क्लिक किया है Good athlete, Shazad. So Reza, let's see how he responds. Good cricket, very good cricket. 2 स्कोर बहुत ही तेजी से 2 स्कोर हासिल किए हैं That was close. That was बहुत close. तेजी से स्कोर हासिल किए Khalid was struggling there for the second. Yeah, that was और close. वही मैं जो बात कर रहा था उन्होंने एग्जैक्टली जो है वो मैच उसी तरह खेलना So 3, 6, 2, 11 off the over already. ये देखिए पूरा बैट लेके जाते हैं और ये खतरनाक हो सकता था I'm surprised he didn't. ये स्कोर नहीं था No, yeah, I'm surprised he. But that's what pressure of a big game does to you. Yeah, you're out there, you've been fielding for 4 days, and the legs aren't quite what expect them to be. 2020 is very demanding, and एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती yeah. है थोड़ा सा रिस्क भी लेना पड़ता है So in comes Reza, balls to Khalid. और बहुत पीछे बॉल वो इतना पीछे बॉल स्पिनर के लिए तो जहर है और आधी पिच में बॉल फेंकना वो दावत देना है अपने ये लोग मुझे मारे Beautiful six by Khalid. बहुत अच्छा और उसको किसी भी गलती के बगैर Over mid wicket, just picked the line up. I think Reza earlier on when he bowled full, he was getting much better. much better yeah results, that's I agree with you The moment he pitched it short, Khalid picked up on even it. too short Yeah, it was too short. Yeah. too short yeah it's unbelievable you can't expect from Raza The score is 170 after 18 overs with 6 wickets down. 2 ओवर का खेल जो है वो बाकी है अब देखते हैं कि 200 को ये टच करते हैं या फिर 90 में जाते हैं 190 में आश्रम से काफी बाहर This is what he's talking about. Discipline in the legs, in the line.
in the areas you're bowling, because from being a 20-20 match, it becomes a 22 over match. Yeah, and you'll see this. और एक और वाइड बॉल और थर्ड मैन की पोजीशन पर बॉल आया, 2 रन हासिल किए, 3 runs because 2 और टोटल मिले हैं 3 रन इस बॉल पर और कोई बॉल नहीं अभी तक. ओवर स्टिल देयर, नथिंग टू डू. It's about discipline, about talking. You know, you've got to hit your lengths. What we used to do at Loughborough University is we used to have 3 towels, and we used to hit the bowling at different lengths. Lovely shot there from Shahzad. I don't know if he's middled it or not, but it will give him 1 run. Didn't quite middle that. He placed it बहुत well. आराम से पेस के साथ ही खेला है उसको, He didn't quite middle it. Like the 6 he hit over mid wicket. क्योंकि यह के बाद दीगरे काफ़ी विकेटें गिरी हैं, तो वो अब और रिस्क लेना नहीं चाहते, 2 और 1 पर ज़्यादा इंसार कर रहे हैं, और जो लूज बॉल मिलेगी उसको फिर वो. At this stage though, with 12-14 balls to go, you've got to go for it. Yes, that's true. You've got to, so you can अब तो मेरा ख्याल रह गए हैं सिर्फ this is the fun time 8-10 बॉल रह गए. where you have a license to do whatever you want. Yeah? अब मेरा ख्याल वो There are no rules in 2020. और बोल्ड कर दिया है. ये देखें ना, जो 6 के लिए फुल टॉस पे और लैंडिंग से फुल टॉस था, और बिल्कुल ब्लैक होल पे था. For me, Talat has bowled exceptionally. Yes. He's bowled exceptionally well. He for me has been the pick of the Canadian bowlers. Talat. ऐसे बॉल को हमेशा देखें फ्रंट फुट पे जाके लेग साइड पे खेला जाता है, लेकिन उन्होंने खड़े होकर उसको जो है वो क्रॉस खेला है, और लैंडिंग था वो फुल टॉस बिल्कुल चेस्ट के नीचे, तो वो उसको पूरी तरह जो है वो हिट नहीं कर पाए, मिस किया और सीधा विकेट के अंदर बॉल गया. See what I haven't seen here is a lot of cricketers now using the ramp shot, and what they tend to do is they'll move to the offside and they'll ramp it. That's exactly. And that's what that shot needed. It didn't need just staying in the normal position. I think he could have. I mean, he's played really well, Khalid has, but it's just different techniques in cricket now in 2020. And I think possibly he could have used the ramp shot there rather than staying in his traditional position. That's exactly what I'm saying. So Talat, for me, bowled exceptionally well. He's varied his pace, he's varied his line, and he's picked up a couple of really good wickets. He's been the pick of the Canadian bowlers for me. और ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन बॉलर विकेट बॉल को कलेक्ट नहीं कर पाए सही तरह. The umpires there telling the batsman to not run on the track. बिल्कुल. Quite rightly so. Any degradation in pitch conditions. नए बैट्समैन Harris. और कैच ड्रॉप कर दिया पॉइंट के फील्डर ने. I think England will be anything above 180 is a good score. बिल्कुल, ये मैंने आपको कहा था कि अगर 70 प्लस करेंगे तो काफ़ी चांसेस हैं ये मैच जीतने के. 2020 is a funny game. बिल्कुल. We've seen that, with Carlos Brathwaite come in, change the rules of cricket. 4 consecutive sixes. We've seen Yuvraj hit 6 sixes. Yes. Yeah. So that's the beauty We have of the game. Fazal hit twice. और Beautiful shot by Shahzad. लेकिन महफूज है, 1-2 रन हासिल करेंगे इस बॉल पे. शहजाद से पॉइंट के ऊपर से खेला है, थोड़ा सा आपिश रहा, बॉल महफूज था. 2 good new youngsters for England here, Shahzad and Harris. I had the privilege of touring with Harris in Malaga, and he scored a phenomenal 70 runs in very few runs. 4 रन मिलेंगे बॉल पे, और बहुत खूबसूरत फील्डिंग. Canadian fielding's been good. It's improved. Earlier on in the day, they were struggling because, perhaps because of nerves, perhaps because of different areas.
and the fielding has improved significantly during the course of the day. आखिरी ओवर का खेल बाकी। आखिरी है, लास्ट ओवर है उसका, लास्ट ओवर है, लास्ट ओवर। भाई क्या हुआ? और शहजाद का उठता हुआ शॉट और ये कैच ड्रॉप। हारिस सामना करेंगे तल्लत का। 5 बॉलें रह गई हैं इस मैच की और ये देखते हैं बॉलर कैच करते हैं और ये आउट। हारिस आउट होकर वापस। इजाज है नए बैट्समैन। 8 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। 184 स्कोर, एक अच्छा स्कोर। चार बालों का खेल बाकी। सामना करेंगे शहजाद। इस दफा इजाज आए नए बैट्समैन। शाबाश। Talat is bowling well there. For me, he's been the pick of the Canadian bowlers. He's bowled slower balls, he's bowled Yorkers, he's bowled shorter balls as well. He's picked up a couple of good wickets there. इस दफा कामयाब खेलने में महफूज एक स्कोर हासिल कर सके और इजाज गए हैं और शहजाद रन आउट हो गए हैं। इजाज ने कोशिश की कि 2 रन मुकम्मल कर सकें। 9 डाउन। Just waiting for the last delivery and then hopefully inshallah we'll So the new batsman is Rahman. More of an all-rounder bowler. Bowling all-round. Umair 11 210 40. So Umair 11 have scored 200 for 4 in 20 overs. For 4
in 20 overs. That's against England A. And I think he's been their best bowler. He has been about it. He's so अस्सलाम वालेकुम दाऊद साहब आप अहमद दाऊद साहब आप अपना तारीफ करवाएं कि आप कौन सी क्लब के लिए खेलते हैं सैटरडे को तो हमें ये बताएं कि जो क्रिकेट रब्बा में है और जो क्रिकेट यहाँ है उसमें क्या वहाँ पे फ़र्क है जिस सीज़न में मैं छोड़ के आया हूँ वो वहाँ पे यानी कि टॉप नहीं थी लेकिन वहाँ पे सिंपल पे थी जी तो ये डिफरेंस है कि वहाँ पे सिंपल थी यहाँ पे टॉप पे जी तो ये डिफरेंस है तो आज की पिच कैसे लगी आपको आपने 90 रन किए माशाल्लाह बहुत अच्छे शॉट्स मारे वो आई फैक्टर ये थी और एक होता है बैट्समैन का पकड़ा जो कहते हैं तो वो लास्ट मैच में 100 जी और इसमें भी बैट की बॉल आ रही थी जी तो वही मैंने और हमारा था प्लान जो कैप्टन और कोच के साथ वही प्लान था तो मुबारक साहब आप भी आकर पूछें थोड़े सवाल अस्सलामुअलैकुम दाऊद साहब माशाल्लाह कल आपने बड़ी अच्छी इनिंग खेली इस वक्त तक आप टॉप स्कोरर हैं पूरे टूर्नामेंट के और बड़े अच्छे स्ट्रोक आपने हमें दिखाए कल भी और आज भी कल तो सारे लोग ये कह रहे थे मैंने व्यूज़ सुने कि कल क्योंकि एक टीम उस लेवल की नहीं थी लेकिन आज हमने देखा है कि आपने एक इंटरनेशनल लेवल की जो टीम इसमें काफ़ी रज़ा साहब हैं और काफ़ी बॉलर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं आपने किसी को भी माफ़ नहीं किया तो जो मेरा प्लान था वो यही था मैंने उनके हैवी होना तो अटैकिंग पोजीशन पर रहना है डिफेंस पे नहीं तो मेरा टूर्नामेंट यही था प्लान मैंने अटैक पे जाना मैं ड्रॉप भी करते कैप्टन और कोच ने यही कहा था कि डजन मैच तो अपनी गेम खेलो वही प्लान किया मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी है लास्ट में मैंने महबूब साहब से जिक्र किया उसका कि आपको पता था कि आप 92 पे खेल रहे हैं तो हर प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा है कि वो जब सेंचुरी के करीब आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि यार हम डबल सिंगल करके अपनी सेंचुरी पहले निकालते हैं लेकिन आपने जो हिट किया है स्ट्रेट टू बैक टू द बॉलर और वो बाउंड्री पे जो लास्ट आपका कैच हुआ तो वहाँ मुझे एग्जैक्टली हमने यहाँ पे बात की कि इस वक्त जो आपने ये वो शॉट खेला है वो अपने लिए नहीं खेला टीम के लिए खेला मैंने कैसे भाई थे मेरे साथ मोस्ट एक्सपीरियंस हमारे प्लेयर उन्होंने भी यही कहा था कि सेंचुरी के पास नियर अबाउट पहुँच गया तो मैंने उनको यही कहा था कि मैं टीम के लिए खेला जैसे मेरी आ रही है मैंने सेंचुरी तो वही मैंने किया मैं उससे अटैकिंग पे गया ये बहुत कम प्लेयर्स में की सोच ऐसी होती है बहुत रेयर प्लेयर्स हैं जो महमूद साहब क्या मैं ठीक कह रहा हूँ बहुत कम प्लेयर ऐसे हैं जिनमें ये चीज़ पाई जाती है He plays for the team, right? It's not selfish at all. I've witnessed that he scored 130 yesterday, and it was phenomenal. And the way you, with due respects to Raza Saab, who is a very good player, he's an international player, but there was no sign there of any of nervousness, and you went out there and you played amazing. What we're talking about these things. और आगे जो आपका प्लान है मैंने आपका देखा वो चार्ट तो आपने जो है 13 बाउंड्रीज चौके लगाए हैं और 3 छक्के लगाए हैं तो पहली बॉल पे ही आपने फ्लिक किया है तो वो बॉल के मेरिट के हिसाब से किया या आपका प्लान था कि मैंने जाते ही शुरू हो जाना है नहीं बॉल के मेरिट से कोच और कैप्टन ने यही समझाया था कि बॉल किसी को ये नहीं ओवर जज नहीं करके खेलना आपने मेरिट पे जाओ जो मिलती है उसको छोड़ना नहीं है जो लेंथ है उसको और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो पिछले कुछ सालों से आप बी टीम में थे और वो सारा गुस्सा निकाल रहे हैं इस दफ़ा ये टीम में आके कि मुझे इतनी देर आपने बी टीम में क्यों रखा नहीं ऐसा कोई मसला नहीं वो मुझे ए टीम वाले लास्ट 2 ईयर्स बिफोर मैं ए में था क्योंकि मेरी
फिंगर इंजरी हो गई थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। टीम ही था, लेकिन 2 ईयर से वो मुझे ट्राई था कि ए में खेलूँ, लेकिन मैं कंफर्टेबल बी में था। डजंट मैटर, मैं ए में। अच्छा, आपकी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं उस टीम में अपने I आप was को captain of the B team, so please don't, the B team is a good team, yeah. So, हमारे खिलाफ भी इन्होंने मैच खेला था, याद है इनको। तो बदकिस्मती से ये मेरी बॉल पे आउट हो गए। तो बहुत अच्छा लगी आपकी इनिंग्स देख कर, और होपफुली कि आप फाइनल में भी अगर आप जाते हैं, अल्लाह करे आप जाएं। हमारी तो दोनों टीमें हैं, कनाडा की हमारी मेहमान टीम है, हमारी तो यही दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जो है वो खेल पेश करने की तौफीक दे, और सबसे बड़ी दुआ ये है कि कोई भी प्लेयर्स इंजर्ड ना हो, किसको चोट ना लगे, और बेहतरीन खेल पेश करें। और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, किसको फाइनल में जाना है किसको नहीं जाना वो जानता है, कोई भी कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह ताला आपके साथ हो। बहुत नाज़रीन को महसूस किया आपने अपने शॉट्स के साथ, और अगर आप फाइनल में जाएंगे तो हम तवक्को करेंगे इस किस्म की दोबारा गेम हम दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। ये थे दाऊद साहब जो इंग्लैंड की तरफ से 92 रन इन्होंने बनाए हैं आखिरी बॉल पे बाउंड्री के ऊपर जो इन्होंने कैच इनका हुआ है, और बहुत खूबसूरत शॉट आपने देखे अगेंस्ट कनाडा की बड़ी एक्सपीरियंस बॉलर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, और अच्छे शॉट्स खेले उन्होंने। अब हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा के we've got here the bowler for Talit Malik. And Talit Malik was the bowler who was bowling yorkers, slow balls, shorter balls. और Talit, हम आप अपना तारीफ करवाएं कि किसके लिए खेलते हो? मैं वहाँ पे कनाडा में खेलता हूँ, अपनी जमात से खेलता हूँ, और एक 2 2020 की लीग है भाई ब्रैम्पटन में हमारे साथ ही है। और ये टोरंटो में है? ये टोरंटो में। अच्छा, तो वहाँ का स्टैंडर्ड कैसे है? स्टैंडर्ड वहाँ का काफ़ी हाई है। जो हमारा प्रीमियर का स्टैंडर्ड है वो भी काफ़ी हाई है। जो वहाँ पे हम खेलते हैं वो लीड भी है, लेकिन मैं प्रीमियर खेलता हूँ अपनी जमात की तरफ की टीम 50 ओवर, और 25 भी हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने डाली हुई है, YCC का नाम किया वो वहाँ पर 25 की। तो आप कौन सी गेम के साथ खेलती हैं? पिंक, वाइट कोकाबुरा बॉल, और वो ज़्यादा स्विंग होती है ज़्यादा ये जो आपने देखी है यहाँ की, मैंने भी देखा है तो ज़्यादा स्विंग होती है और ज़्यादा स्विंग होती है। तो आपको ये ग्राउंड कैसे लगी? ग्राउंड ये ग्राउंड बहुत अच्छी है, लाइक जहाँ पे हम खेलते हैं सेम लाइक हमारा स्टैंडर्ड भी जो क्रिकेट का प्रीमियर लेवल का वो किंग सिटी में काफ़ी अच्छी ग्राउंड है, लेकिन नॉट लाइक दिस ग्राउंड बेटर देन अस। अच्छा, तो आपको पसंद आया? रियली नाइस। ये आपकी पहली टूर्नामेंट है? नो, ये मेरा फोर्थ टूर्नामेंट है। अच्छा, बहरहाल आपको बहुत खुशी हुई है, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, और हमारी दुआएं आपके साथ, और गुड लक। और मालिक साहब, आपने कोई सवाल करना? नहीं, आपने काफ़ी तफसील से पूछ लिया। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप यहाँ पे आए, और हम आपको दुआओं के साथ दुआएं चाहिए आपको। इंशाल्लाह आपके प्लेयर्स अच्छे हैं, अगर आप कैलकुलेट करके खेलेंगे तो इजीली अगर वो बना सकते हैं तो आप इजीली दिस विकेट हमारी दुआएं दोनों के साथ मोर देन 200 स्कोर दिस विकेट सीरियसली। बात तो अगर आपने पिच भी देख लिया है कैसी खेल रही है, बॉलर्स आपको कल देख लिए थे कैसे हैं, और तो चलें ठीक है, आप अपनी तैयारी करें फील्डिंग बैटिंग। So hopefully we'll continue coverage in about 10 minutes time. The weather here has been absolutely beautiful here. We were very blessed. It's a great day. Two good teams, a combination there of youth and experience. People from Pakistan, people from Toronto in Canada, sharing with you some of their thoughts and feelings about the community and the bringing together of people from all over the world for the World International T20 Masroor cricket competition. So we're going to take a short break and we'll be back fairly shortly, and I hope you'll stay with us for further coverage of the T20 tournament and the semi-final between England and Canada.
Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London. Majlis-e-Sehat UK presents International Masroor T20 Cricket Tournament 2016 live from London.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह यूके की टीम ग्राउंड में आ चुकी है और मैच शुरू होने वाला है। इनिंग दूसरी जो है वो शुरू होने वाली है और कनाडा की बैटिंग अभी आपको दिखाएंगे और यूके की बॉलिंग आपको दिखाएंगे। और अब देखें मैच किस तरफ जाता है। स्कोर एक बड़ा हदफ खड़ा किया है, एक अच्छा हदफ की कहा जा सकता है, क्योंकि अगर मुमकिन है इंग्लैंड के लिए इतना स्कोर करना तो कनाडा की टीम के लिए भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छे बैट्समैन उनके अंदर शामिल हैं, बेहतरीन प्लानर्स भी शामिल हैं, अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले बैट्समैन भी शामिल हैं। अब देखना ये है कि वो इस हदफ को हासिल करने के लिए क्या प्लानिंग करते हैं, क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। अंपायर्स दोनों जो हैं वो चले गए हैं क्रीज पर, पूरी टीम क्रीज पर मौजूद है। इंग्लैंड की फील्डिंग सेटिंग प्रोसेस से गुजर रही। महमूद साहब मेरे लिए रेड बुल लेके आए हैं, जज़ाकल्लाह महमूद साहब। और इसके साथ ही कनाडा के बैट्समैन ग्राउंड में दाखिल हो चुके हैं। स्कोर का प्रेशर, मैच का प्रेशर काफ़ी होता है ओपनर्स के लिए, और ओपनर्स का प्रेशर जो है वो जाता है दूसरे प्लेयर्स को कि अगर पहले दूसरे ओवर में या तीसरे ओवर में विकेट गिरती है तो दूसरे जो आने वाले बैट्समैन हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो स्कोर का प्रेशर उनके ऊपर होता है, दूसरा विकेट ना गंवाने का ख्याल रहता है उनको, और फिर दिफाई जो है वो पोजीशन पे आ जाते हैं, खुल के उस तरह शॉट नहीं खेलते। अब देखना ये है कि इजाज़ जो कि अच्छे बॉलर यूके की इंग्लैंड की जानिब से उन्होंने So back in live from the Tolworth Recreation, from the Tolworth Sports ground here, University ground. Ijaz Ahmed is the England opening bowler, and in comes Ijaz, bowls, beautiful shot there, right off the mark, straight away, a single. Shiraz is the left-handed batsman here. शिराज और तौसीफ हैं बैट्समैन महमूद साहब। मैं बात कर रही महमूद साहब ने इधर नहीं मैच होना, बाल चेंज होया सी राती, नहीं वही बात सेम बात जिहदे नाल मैच स्टार्ट होया वही है। खेल लिया उदों नहीं नजर आया, हूं मेरा आ गया मान हट जो इन्ना
तौसीफ It's quite warm here today, and we need some refreshments as we've been here very early, and including the camera crew. Nasir Ahmed Sab. Just a small query here over the manufacturer of the cricket ball that is being used, and मेड बाय उनको नहीं अच्छा लगा possibly. Well, they use the kookaburra, as he explained, Yes. in Canada, right? And high whatever- quality ball Yeah. Small change in proceedings. We've got a lot of penny spiders here, I've noticed, in the grass. Have you noticed that? हाँ जी Lots of penny spiders जी in the जी grass, बिल्कुल yeah? बिल्कुल धूप है ना असल में तो धूप में थोड़ा सा उनको भी इंजॉय करने का मौका मिल जाता है दोनों अंपायर एक दफ़ा फिर इकट्ठे कैप्टन दोनों मौजूद एजाज हैं बॉलर एक बॉल हो चुका है And one run off it for Tosif, and Shiraz is now facing left-hander. एजाज हैं बॉलर I noticed with Tosif, with Shiraz yesterday, he likes to cut. And what I would have done is I would have put two people in, one at gully and one at point, very close to each other. As a captain, you've got to pick those kind of things up. So let's see if they pick ये that up. अब पे इन्होंने फर्स्ट स्लिप आपने कहा मेरे ख्याल उन्होंने सुन लिया कम से कम फर्स्ट स्लिप उन्होंने ले ली है क्योंकि एजाज की बॉल थोड़ी सी लेफ्ट हैंड के लिए आउट स्विंग जाएगी थोड़ी सी आउट स्विंग करेगी क्योंकि ये इन स्विंग कराते हैं तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है ये देखें काफ़ी आउट स्विंग हुई है बॉल तो ये क्वालिटी इस बॉलर में है ये भी मेरे क्लब में खेलता था मेरी टीम में था एजाज अब चूँकि ये लंदन शिफ्ट हो गया वहाँ से तो ये अब नासिर क्लब से खेल रहे हैं I had the pleasure of touring with him in Spain last year. हाँ आपके साथ हाँ बिल्कुल गए थे ये बिल्कुल मैंने वो मिस कर दिया था मुझे एग्जैक्टली मैं उस वक्त कुछ ठीक नहीं था तो ये देखें बिल्कुल और ये बाहर खड़े थे You can't tell from here. You've got to trust your umpires. बिल्कुल Quite rightly so. Yeah. वो But great thinking by Gasset. Great thinking. And we can't tell from here. You know, so यहाँ से तो कुछ नहीं कहा जा सकता you have to accept the umpire's decisions, which they have, and that's the beauty about this cricket here. No quarrelling. जावेद साहब हैं सामने जो अंपायर खड़े हैं No इजाज हैं बॉलर दो अच्छी बॉलिंग की हैं और इस दफा सीधा और ये थोड़ा सा पिच था तो सीफ थे फील्डर सामने खतरनाक साबित हो सकता था ये जैसे खेला है उन्होंने I think in 2020, the batsman has license, and that's what I used to always encourage my batsmen. Yeah, you set a marker for the first 5 overs, and you give them the license. So let's see how they get on. Yeah. तो सीफ को बाहर ले लिया महमूद साहब एक और बहुत ही खूबसूरत शॉट थोड़ा सा शॉर्ट पिच बॉल था उसको पुल किया है पूरे तरीके से पूरा मिडल किया है बॉल को और बहुत ही प्यारा दिल का स्ट्रोक खेला है वेस्ट पे बॉल था बिल्कुल शॉर्ट पिच और पूरा उसको मारा पूरा ड्राइव मारा Too short. Yeah, he'd been bowling it well, swinging the ball away from the left-hander, and then he pitched one on the leg side, too short. Yeah, which was picked up very quickly by Shiraz. Beautiful shot.
शानी से अजीशा से थोड़ी सी मिसफील्ड हुई. Very intelligent cricket there. सात रन गालबन 6 रन है. 6 runs of the first over. So as we're seeing here, the weather is coming up beautifully. Our cameraman is refreshed and smiling, and he's got an assistant here today as well, which is fantastic to see. So these are the days cricket was made for. When we have days like this. Yeah? धूप जब निकलती तो आपने अच्छा किया सनग्लासेस ले लिए. मैंने वो लिए थे वो ले गया. भी लेकर आता हूँ आपके लिए, आपके लिए ले रहा है दूसरे मैच के लिए आपको दे देता हूँ मैं 2 लेकर आता हूँ. जज़ाकल्लाह. और शहजाद आए हैं, लेफ्ट हैंड से बॉल करते हैं. अच्छी पेस है इनकी और ये भी आउट स्विंग करते हैं. काफ़ी आउट स्विंग इनकी जाती है बॉल. राइज होता है इनका बॉल जो है वो गुड लेंथ से राइज करते हैं ये बॉल को. ये काफ़ी खतरनाक है. It will be a good contest because Shiraz is batted well. He's got off with a beautiful boundary which is taken out. This will be a good contest. In comes Shahzad. और पहला बॉल काफ़ी विकेट से बाहर. लेग स्टंप से काफ़ी बाहर था. पहला बॉल था बाहर गया. एक और रन का इजाफा. Good length ball. Much better. Full in the block hole, moving away. Much better play. That in English we say right on the penny. Bowling like that. Yeah. There's a term they use there. It's called right on the penny. In comes Shiraz. और ये शॉट पे बॉल था और इसको पूरा शॉट खेला है और लंबा छक्का. बहुत लंबा छक्का राज का. बहुत प्यारी शॉट. Do you notice? Ball hitting the batsman by hitting the ball. And then next ball, you hit your shot. So लाइन लेंथ जो है वो बहुत कम करती है. it's about having your nets, yeah, and sticking to them. Right? If it ain't broken, don't fix it. और एक और शॉट और ये आउट होने का खतरा. और ये 15 कैच. खेल नहीं पाए उसको और 6 रन के लिए गए. A youngster in the England team makes his mark. He's a all-round bowler. He's new to the England team, and I'm sure his colleagues will appreciate that catch. Well judged. एक 6 मिल गया था उनको. The new batsman is Akil Anjum. और फिर शॉट पे बॉल होगा फायदा उठाया. नेक्स्ट टाइम पर पड़ी इस शॉट पे बॉल को.
अच्छी क्रिकेट So for our viewers, Akil Anjum is the new batsman in the red helmet, and facing now will be Basif, who is in the blue helmet. So, yes, I need to. The sun is very आज बहुत धूप तेज है, तो अभी स्कोर हुआ है 18 2 ओवर हुई और 2 ओवर का खेल खत्म हुआ विकेट हासिल की है शहजाद ने 100 ओवर में तीसरा ओवर जारी 18 स्कोर है तौर पर कनाडा की टीम का लेग स्टंप्स पे काफी बाहर ये बॉल वाइड बॉल का इशारा अंपायर और ये खूबसूरत शॉट क्लिक किया है पूरा फायदा उठाया फुल लेंथ का वुड लेंथ पे पड़ी हुई इस बॉल को मिडिल स्टंप पे थी और पूरा शॉट खेला उसको 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर where he's been successful bowling it just outside off side. He's got that swing, he's got that natural swing of the bowler as a left armer. If you build a short court pitch ball, or you give it on the leg side, it can be dispatched. Now, he taught that discipline. And if I was a skipper, I'd just go in and have a word with him and just say to him, look, bowl to your field. You've got 5 fielders on the offside, ball on your side. So this is the third over now by coming up with the Jazz. The score is 25 of 2 overs. This is the third over starting. Jazz Ahmed bowling to Anjum Malik. बेहतरीन शॉट थोड़ा सा शॉट पिच था ये भी बॉल और उसको पुल कर दिया उन्होंने But a lovely shot. I mean, no two guys about it. किसी भी शॉट उसको मिस किया Beautiful shots. खेल का गुजारा कनाडा की टीम की जानब से स्ट्रॉन्ग और बड़े कॉन्फिडेंट स्ट्रोक भी देखने को मिले हैं पूरा मिडल करके जितने भी अभी तक 6 और 4 आए हैं पूरा कॉन्फिडेंट खेलने हैं Tosif batting Anjum is only about 3 runs. Beautiful shot there by Tosif. Well fielded there by Zishan Masroor. Beautiful fielding. फिर तौसीफ दोनों बॉल गुड लेंथ पे पड़े हैं आगे थोड़ा सा किया बॉल और ऑफ स्टंप पे रखा तो ज़्यादा एंगल उनका वो खेलने का वो लेग स्टंप पे ही है ऑन साइड पे है As soon as you bowl it short, right, you're asking to be dispatched. And you're much better off trying to aim to hit the top of the off stump. In comes the Jazz Ahmed, bowls. फुल टॉस बॉल लेग स्टंप से बाहर और अच्छी कीपिंग का मुजाहरा कैसर महमूद की तरफ से Very tense. The crowd's really quiet. Evenly balanced. मुch better Much better. Yeah.
just short of the length. That's where he plays it with a bit of respect. Jazz coming in. Was he facing him? They're 33 for 1 after 3 overs. The run rate is 11 over. That is very good. Very good. And we saw that with the Indian team as well. They were right up there. And then when the field restrictions come into place after 6 overs. अगर 3 ओवर्स में इतना ही था जितना अब कनाडा में बराबर जा रहे हैं उस प्रकार के हिसाब से It'll be interesting to see if this pitch gets any spin. We didn't see that much from ड्राई हो चुकी है it was a beautiful play. Yeah. So I think England have got their work cut out now. Canada have got a very good start. They're 33 for 1 after 3 overs. रन के लिए गेंद बाउंड लाइन से बाहर 6 रन लाइव का अगेंस्ट डे
चौथे ओवर का खेल जारी। So again, there was 10 runs off that over. It's 43 after 4, and they're right up with the strike rate at the moment. So नौ रन बने हैं अपना मिर्जा साहब। हाँ ठीक है, 10 रन बने। Ahmad is the 12th man today. Good all-rounder, plays in North London. बिल्कुल। Very talented cricketer. He's been part of the England squad for a number of years now, and still looking very lively. And this makes a huge difference. For me, this is a critical part of the game. Absolutely critical part of the game, because you've now got Khalid coming on with his off breaks, and facing him will be Tosif. So you beg your pardon, it's Akil Anjan. Beautiful shot down to square leg to get 2 off the first ball. The fielder is Shahzad. And very unusual for Khalid to bowl one down the leg side. Very unusual. But and he's also bowling in the power play as well. हाँ जी, यही मैं कहने वाला था कि जो 5वां ओवर करवा रहे हैं आगे हैं। Great variation. Beautiful flight. जी। So for our viewers, Khalid played first-class cricket for Islamabad back in Pakistan. He's the current overseas player at Reading Cricket Club. Right arm off spin. और स्विप शॉट किया है, फील्डर मौजूद, अच्छे फील्डर ने शहजाद। Great arm there by बहुत Shahzad. तेज शॉट था, अच्छा थ्रो शहजाद का वापस कीपर के सीधा ग्लव्स में। So they've decided they're going to sweep, and 2 sweep shots so far, which have accumulated them some runs. So facing Khalid now will be Tosif with the red helmet. Khalid Zafar, right arm off spin. As I pointed out to you, what I like about Khalid's bowling is the variation. He varies his pace, he varies his flight, and you can tell that he's played a very good standard of cricket back in Pakistan and here. So in comes Khalid Zafar, bowling to Tasif. Good use of the feet there, but didn't go through with a shot. I was quite surprised that I suppose the reason why he didn't go through to the shot, we've got a mid-wood. थोड़ा सा लेफ्ट अपना लेग स्टैम्प पर था बॉल और उसको खतरनाक था। दोनों फील्डर उन्होंने देखे वहाँ पे लिए हुए हैं। अगर वो इस शॉट को खेलने जाते तो काफ़ी खतरनाक होता है। ये देखें, अगर उस शॉट को खेलते तो डेफिनेटली वो कैच होने के ज़्यादा चांसेस थे। So you're quite rightly right. So at mid wicket and at कहते हैं कि आप देखें, ये देखें गए खेलने के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग। Only 3 runs off the over. बिल्कुल, very good over there. And after a very good start there by the Canada team with Tosif,
and Anjum Malik at the crease. And 3 runs off the over. The score is 46 for 1 after 5 overs. So we will try and keep up with you and tell you what the required rate and what the current run rate is as well on our live stream. Please do come in with your comments. Our tweet is at Majlis-e-Sehat, and we would welcome your feedback and your comments on today's broadcast. And that's spelled Majlissehat. In comes Rahman for his second over. Medium face. That's the top line there by Rahman. He's bowling it just short of a length, and it's in that area of uncertainty for the batsman. 9.3 रन की एवरेज दरकार है महमूद साहब इस वक्त कनाडा की टीम को अगर ये मैच जीतना है, और 1 विकेट का नुकसान उठा चुकी है कनाडा की टीम। और खतरनाक, बहुत अच्छा बॉल, गुड लेंथ से राइज हुआ थोड़ा सा बॉल और उसको समझ नहीं पाया बैट्समैन। What I like about Rahman is his discipline. Yeah, if you notice, he's bowling. If you look at his pitch marks in the area, he's bowling typically in a good area, just short of a length. And I think that discipline will do well in 2020. So Rahman bowling. कुछ थोड़ा सा पेस को स्लो किया, अपने बॉल को स्लो किया, स्पीड स्लो किया उन्होंने। पहले ओवर में काफ़ी पेस थी और तेज़ थी बॉल उनकी, क्योंकि स्पीड कम किया उसको अपनी स्पीड को, और लाइन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब। So it's going to be it'll be interesting to see how Akil responds. We've had 3 dot balls so far, and we might see a bit of more aggression. दफाई अंदाज अपनाने पे मजबूर कर दिया उन्होंने, to the point. And you know what's happening here? 4 dot balls, it creates pressure. All right, every dot ball is creating pressure on Akil, and what he should be doing here, he should be literally trying to rotate the strike rather than doing what he's doing, which is looking for the big shot. I think that's something which he might want to consider in the next 2 deliveries. और ये काफ़ी फायर बॉल था, अच्छा ओवर। Great discipline, 5 dot balls. Yeah. And I'm sure the skipper will be saying, let's join up all the dots, and it creates a big M for you, which is the maiden. Maiden, yes. So, an exceptionally good first 5 balls here from Akil. 9.3 from Rahman, sorry. और ये beautiful shot. बहुत ही मैं क्या उन्होंने आवाज़ ना कहीं पे ना। That's still a good over there. Yeah. So the 50 up for the Canadian team in 6 overs. So the field restrictions will now be loosened, and the internal restriction of only having 2 fielders in the inner circle will now be restricted, and they can now have more fielders in the outer circle. So it's going to be Khalid Zafar to continue bowling right arm off spin. 9.7 required. So the current run rate is 8.2, and 9, and the required is 9. 9.7. 9.7 required per over. Change of bowler.
that's a beautiful shot there by Tosif. Just picked it up after that massive six. And Haris is, that was not a good start. On the leg stump. पहले ही बॉल पर 6 रन्स. Haris was telling me he's suffering a little bit from a shoulder injury, so I'm surprised to be seeing him bowling. Yeah? But let's see how he gets on. In comes Haris. That's a much better line, much better line. .57 of 6.2 overs. Chasing a target of 186. In comes Haris, and that will be wide. So Haris hasn't found his radar yet so far. Needs to focus on those areas which Rahman has found so successfully today. In comes Haris. और एक और खूबसूरत शॉट, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रोक. तौसीफ का इस दफ़ा तौसीफ हैं सामने, तौसीफ ही अच्छा शॉट्स खेल रहे हैं. हारिस हैं बॉलर. Beautiful shot through. हम साहब बर्मिंघम में काफ़ी हमारे दोस्त आमिर साहब हैं, आमिर रब्बा से ताल्लुक़ है जी, वो देख रहे हैं. हमने अभी कमेंट किया है कि हम लाइव मैच देख रहे हैं और शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे कैमरामैन और सारे क्रू का, और इंजॉय कर रहे हैं सारे दोस्त बैठ के. आमिर काजी उनको कहा जाता है जी. जज़ाकल्लाह आमिर साहब. अच्छे प्लेयर हैं, लीग खेलते हैं ये भी, और क्रिकेट के सिदाई हैं और बेहतरीन बैट्समैन और कीपर. एक दफा फिर तौसीफ ने उठा दिया और सीधा फील्डर के हाथ में, और तौसीफ को आउट कर दिया है हारिस ने. बहुत ही क्रूशल विकेट की विकेट हासिल की है मेरे साहब. ये इंग्लैंड 52 for 2 in 7 overs. So in response to Amir's 200, England A are 52 for 2 in 7 overs. Target 211. And the target is 211. So Clark Saab, I cannot answer your question. You will have to watch the stream on www.majlis-e-sehat.co.uk. And from Germany, Clark Saab, thank you for your message. But please follow the match during the stream. Jazakallah. So 2 wickets down there, and score is 61 for 2 after 6 overs. The current run rate is 10 and over, and chasing a target of 186. हारिस अपना ओवर जारी रखेंगे. Anjum is the batsman. I'll find out who the new one is. Yes, it's Raza Rahman. I can spot him. Captain of the team, yeah. Yes. Quiet or current dono? So the current is 10 per over. In comes Haris. Full toss, and that got what it deserved. Down the leg side. Beautiful shot there by Akil Anjum Saab. Haris hasn't bowled well. I know he's picked up the wicket, yeah, but we've seen too many balls down the leg side, I'm afraid. What are your thoughts, Mubarak Saab?
He's been dispatched for 2 boundaries and a 6 in this over. बिल्कुल वो थोड़ा सा मुहतात होना चाहिए था और सही तरह कलेक्ट नहीं कर पाई है इसको 8 Again down leg side. 8.9 की रिक्वायर्ड रन रेट है इस वक्त जो चाहिए इनको I think this is a crucial part of the game here now because Raza's captain will have a lot on his plate. The captain always leads from the front, and he and Akil now will have to build upon this. 66. 9.3 required run rate. So Rahman, who has been an exceptional bowler today, I think. Yeah. Last over you saw 5 dot balls, and it's a pity last ball. Akil placed him for 4 down the leg side, but he's bowled really well. वो बहुत अच्छी bowling का मुजाहिरा. Really good discipline, good lengths, good line. In comes Rahman, and again right on the penny. Beautiful bowling. और ये शो डाल के रन नहीं लेने दिया. There was a run there, and Tasif did exceptionally well, but I'm afraid they missed out on the run. It's the pressure. इसके बावजूद वो रन ले सकते थे. Yeah, it's about pressure. It's about keeping the strike rate rotating. एक बार फिर तौसीफ और ये ओवर थ्रो का एक स्कोर. बैकअप नहीं हुआ सही. You could see, well, to be fair, there was no threat. No threat. And he didn't need to. Tasif needed to just hold on to the ball. बिल्कुल. Yeah. And be a bit more strategic with his throw. जी बिल्कुल ठीक है. अपडेट करा था. So Raza facing here for the first ball. And Rahman is the bowler. वाइट बॉल और कीपर को मिस किया है इस बॉल ने. 5 रन मिले हैं इस बॉल पे जो बिल्कुल किसी खाते में नहीं जाते. This is the advantage of having left and right. When you've got people rotating the strike with left and right-handed, all right, it creates confusion for the bowler. And the Jars has been moved finer here now. So much better line. And Rahman has been, apart from that last delivery, has been an outstanding bowler so far for the team. Bowled really well. Bowled disciplined lines. His pitch map is very good. So in comes Rahman, bowls to the Canadian player. और तेजी से एक रन मुकम्मल किया. And a quick run there by Rahman. So Rahman, for our viewers who may be just joining us, plays for the Canada national team, and he's also the Canadian captain here today. Bowled left arm off breaks and a middle order batsman. So facing now is Akil. Rahman is the bowler. Beautiful shot. काफी ऑप्शन से बाहर बॉल था और इसका पूरा फायदा उठाया अकील ने. एक था ना बैट्समैन. Akil Anjan is the batsman. अकील ने पूरा फायदा उठाया इसका जो आउट ऑफ द ऑफ स्टंप था. शॉर्ट पिच था और दोनों ही कंडीशन बैट्समैन के लिए बहुत ही मौजू और बेहतरीन थी इस शॉट को खेलने के लिए. Gave him too much room. हाँ जी. Previously when he's been अच्छा माहौल जिसको कहते हैं वो दिया खेलने के लिए. Previously when he's bowled close to the batsman, right? And there he gave him space. और इसको आग पे खेलना चाहते थे. बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर फाइनल लेग की तरफ एक स्कोर हासिल किया है मोहम्मद साहब और अकील ने. I believe we're here for a
स्कोर बढ़ता हुआ 73 78 जज़ाकल्लाह। Quite a costly over there by Rahman. His first 2 overs were measly and he bowled quite well, but he gave away 10 runs in that over, and that's quite costly. So the score 9 is रन की एवरेज दरकार है, 9 रन की एवरेज दरकार है ये मैच जीतने के लिए कनाडा को। and the score is 78 for 2 after 8 overs. So the current run rate is 10 and over, and chasing a target now of 186 का टारगेट है, हदफ है, और 9 रन की एवरेज सर 9 रन की एवरेज जो है वो लेके जा रहे हैं ये तकरीबन। तो it's 10 because if you do 8 times 10 it's 80. नहीं वो नहीं मैं कह रहा, मतलब राउंड इसी एवरेज में वो जा रहे हैं। They're going at 10 and over at the moment. रिक्वायर्ड है 9 पूरा। Required run rate is 9 per over, which on this ground is not a lot. बिल्कुल। Gasser is asking him for his helmet, and Ahmad will be running on. सिर्फ यही है कि विकेट्स जो है वो अगर कनाडा के नहीं गिरते तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी इंग्लैंड के लिए ये मैच को बरकरार रखना, इस अपनी मेहनत को जो वो उन्होंने कंट्रीब्यूट की है। Good change here. It's Zishan Nasir who's going to be bowling his off breaks. Yeah. And I think spin is critical in this game. Absolutely critical. The spinners win or lose you a game. And you look at all the top sides in the world. They've got good spinners. Ryan for West Indies. They've also got the other leg spinner. So they have 2 quality spinners in their team. You look at the Australians, again, very good leg break bowler and a good off break bowler. So I think this is a crucial part of the game to see how Zishan bowls. He's just adjusting his field. He's got 3 men on the leg side for our viewers, and he's got on the boundary, and he's got 2 boundary riders on the offside. In comes Zishan, first ball. Beautiful square cut. बाहर पास था, फील्डर मौजूद हैं शहजाद वसीम। Beautiful arm there by Wasim, right over the stumps. That came back. That ball came back like a rocket. So good start there by Zishan. Yeah. First ball is very important for any bowler. बिल्कुल। Yeah. It sets a marker. It sets a marker. थोड़े से बादल ग्राउंड पे आ गए हैं अपना मेरा साहब जी, और एक दफ़ा फिर फील्डर सीधा फील्डर के हाथ में एक स्कोर हासिल किया और ओवर थ्रो का एक और स्कोर हासिल हुआ। शहजाद हैं आप सामने। I think that was Tasif. And तसीफ हैं बिल्कुल। He's done that twice now, and I don't think the captain, if you saw the reaction from the captain, Khalid, it was not appreciated because that's the second time that's happened now. बिल्कुल। And Zishan. और इस दफ़ा शहजाद हैं फील्डर, एक ही रन बन पाएगा। बहुत ही सेंसिबल क्रिकेटर हैं ये शहजाद, और जुनूनी भी क्रिकेट के मामले में काफ़ी। He's got a great arm as well. बिल्कुल। So critical for the boundary riders to have a good arm. और काफ़ी बाहर बॉल थे, अच्छा स्विप शॉट, अच्छा फील्डर है सामने, एक ही रन बनेगा। For 8 overs. So thank you Asad Saab from Egan for phoning in and telling us that you're enjoying the commentary here and watching the live stream. He's watching it with his brother-in-law Tayyab Abbas Saab, and we appreciate your feedback and your comments, and look forward, if you want to, you can also tweet to us at Majlis-e-Sehat.
good bowling there from Zishan. Yeah. शहजाद है फील्डर, रूम नहीं दे रहे उसको खेलने के लिए। Top bowling. बैक फुट पे जाने पर मजबूर किया खेलने शॉट्स। And we will, in the other semi-final, England A are playing Umair. Just for everybody's benefit, England restricted Umair to 211. In response, England were 57 for 2. 71. 71 now for 3. 9 overs. In Nine 9 overs. And there's some good players in that team as well. You've got Abid Ahmed, you've got Lake, you've got Abdul Aziz. Both Abid and Abdul played first class cricket in Pakistan and are playing for good clubs here as well. 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 186 हदफ है, 83 स्कोर बना चुका है टीम कनाडा और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं और 9.3 की एवरेज दरकार है इस मौके पर। In comes Khalid Zafar. For me, Khalid was the best bowler of the tournament last year, and you could see. Last year, yes. Yeah. You know, when you play for Islamabad, right, yeah. and you know you're playing in the home counties Premier League, you know his quality. He's got such good variation. Even when you're facing him, all right, his change of length and change of pace is superb. दूसरा बॉल फेंका है। Great control, great control. 2 dot balls, and Jim is frustrated. You can see straight away from the body. डेफिनेटली अगर पहले 3 बॉल या 2 बॉल जो है वो बॉलर डॉट फेंक देता है तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है अपना बैट्समैन के लिए, उसको शॉट बना के मारना पड़ता है। इवन आपको अगर आपका फेवरेट बॉल मिल जाए तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास होती है, फिर सारा प्रेशर जो है वो बॉलर पर आ जाता है। पहले 2 और 3 बॉल जो है वो एक विकेट का एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करती है। बिल्कुल सही। और बैक फुट पे जाकर इसको खेला है। ज़ीशान है फील्डर, किसी भी स्कोर का इजाफा नहीं कर पाए इस दफ़ा। 4 बॉल जो हैं वो मेडन फेंके हैं जफर, खालिद जफर। In comes Khalid, bowls. Quicker ball there. और बहुत खूबसूरत बॉलिंग का मजा You see the quicker ball? It's the arm ball. He bowls it at a quicker pace, and real pleasure to watch. He was voted the best coach in the entire UK. Khalid was for the entire UK. He plays for Reading, and phenomenal cricketer here. Just a single off the over. Now that is what you say when the captain leads from the front. Great over there from Khalid. 1 run off it, which is very unusual in T20 at this stage. So Khalid was the leading wicket taker in the competition last year. Run rate update. Current run rate is 8.4. Required 10 and required is 10. So at the halfway stage, the fielders will now change ends, and the umpires will as well, and we will now be bowling from the pavilion road end of the ground, and this is a beautiful setting, and we would welcome as many. We'll have over 1,000 people at the final this afternoon. Inshallah. At the Abbey Recreation Ground. It's a great family atmosphere. There are picnics, there is food, there is great cricket and good company. So we would welcome all of you to come along and watch the final this afternoon, where you'll see some really good, top quality cricket being played on beautiful pitches. ज़ीशान अपना स्पेल जारी रखते हुए बॉलिंग स्टार्ट पर खड़े हैं, फील्डिंग सेट करते हुए देख रहे हैं। और डाउन द ट्रैक आया, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लंबा छक्का, बहुत ही प्यारा दिलकश अंदाज कनाडा के प्लेयर का। थोड़ा सा 2 कदम आगे निकले और पूरे एतमाद के साथ स्विप शॉट फ्लिक किया उसको और मिड विकेट पर 6 रन हासिल किए। So great use of the feet there by Akil. All right. Lamba chakka. Came down the track, got to the pitch of the ball,
and this it was the wrong line because it was leg side. बिल्कुल, लेकिन ये देखें कि उन्होंने वो शॉट बना के मारा है और देखें बॉल परफेक्ट था, इतना गलत नहीं था, लेकिन वो डाउन द ट्रैक आए, उन्होंने रिस्क लेके उसको मिडल किया, बना के मारा शॉट और बहुत खूबसूरत शॉट मारा और ये उनकी ज़रूरत थी क्योंकि थोड़ा सा रन रेट जो है वो हाई हुआ था। एलपी की अपील, लेग स्टंप पर ये बॉल पड़ा था। I think he's bowling that wrong line. All right, he's bowled 2 balls. They've both been down the leg side, and I think he needs to start bowling on the offside. Yeah, because look at his और fielders. एक दफा फिर तेज शॉट है, 4 रन। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद साहब, ऑफ साइड पे फील्ड है सारी और अभी तक जो 3 बॉल 4 बॉल उन्होंने फेंके हैं वो सारे लेग स्टंप पर, बिल्कुल सारे लेग स्टंप पे फेंके हैं और उसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। 10 रन उनको अब तक पड़ गए 3 बॉल पर। You know what? It's not Khalid's fault here, right? Because he's just given 1 run in the last over. बिल्कुल ठीक बात। And then it's frustrating for a captain, right? That's a better line, much better line, because he's got protection out there. बिल्कुल, वहाँ फील्डर मौजूद हैं। Whereas it's a free hit on the leg side. Yeah, the batsman can open up his arms and hit through the ball. And I think he's much better pitching it on the off stump and letting the ball turn away. ठीक बात है। लेकिन बहुत अच्छा मैच, दिलचस्प मैच है, फाइटिंग मैच है और दोनों टीमें इस तरह बराबर लड़ रही हैं और एक प्लानिंग के तहत, एक होमवर्क के तहत ये मैच। In comes Ishan, bowls. Much better. See, off stump. दो बॉल उन्होंने ऑफ स्टंप पर फेंके हैं और एक स्कोर उनको पड़ा है सिर्फ। It's simple cricket. You know, you've got to bowl to discipline. You've got to bowl to your lengths and your line. और ये फिर लेग स्टंप पर बॉल है। He's lucky to get away with that. इसने फील्डर वहाँ ले लिए, 2 स्कोर उनको और लगे हैं यहाँ। He's very lucky to get away with that. And what I noticed there was 13 स्कोर उनको लगा। Raza didn't go through with the shot. If he'd gone through with the shot, I think that would have been a boundary because it dissected the 2 fielders. ओवर चेंज कराना। और फिर दोबारा से 9 रन की एवरेज दरकार है ये मैच जीतने के लिए कनाडा को। बड़े ही अच्छे बैलेंस अंदाज में ये मैच को लेके जा रहे हैं थ्रू आउट। जब से शुरू हुआ है, एक ओवर में अगर कम स्कोर लगता है तो दूसरे में वो कोशिश करता है और डाउन द ट्रैक आए खालिद जफर की इस बॉल पर। खालिद जफर ने थोड़ा सा बॉल और खींचा और कोई भी मौका नहीं दिया उसको स्ट्रोक खेलने का बैट्समैन को। थोड़ा सा डाउन द ट्रैक आए थे और लेग स्टंप पर पड़ा हुआ ये बॉल स्वीप करना चाहते थे, पूरी तरह उसको नहीं जज कर पाए और रिजल्ट। ये बैट बॉल था, लकी रहे कि वो बॉल उनके बैट पर नहीं आया, पूरा अच्छे था। दोबारा फिर डाउन द लेग साइड और ये 4 होंगे लेकिन बाउंड्री काफ़ी दूर है। So 2 runs there. 2 रन हासिल किए and wide as well, so it's 3 runs. 3 runs, yes. Now it must be the wind. That's the only thing that I can take into account. That the reason why. मेरा ख्याल अपना तो जो स्वीप मार रहे हैं उन्होंने वहाँ पे फील्डर लेके 2। So Canada are up to 100 now, and looking ominous here. This Canadian team has won this tournament 3 times. And 3 times England as well. Yes. They are equal now. They're equal, so let's see. So Khalid comes in,
bowling to Anjum Malik. और ऑफ स्टंप से काफी बाहर था ये बॉल और उसको you're only going to get a single because they have fielder on the boundary line. It's still been a good over. He's only given away 3 runs. पॉइंट के फील्डर को मूसा पीछे लिया है लेफ्टी के लिए और अब जो है वो पॉइंट पे शायद अभी तक उन्होंने फील्डर पॉइंट पे नहीं लिया और बाउंड्री पे भेज दिया उसको। पॉइंट पे उन्होंने अब फील्डर को प्लेस किया है खालिद जफर ने और बहुत ही खूबसूरत शॉट और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा ज़ीशान की जानिब से। बहुत ही अच्छी शॉट, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक था और बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा ज़ीशान की तरफ से। So Khalid is bowling the right line. He's bowling on the off stump, which is I hope. और डाउन द ट्रैक एक दफा फिर अच्छा गैप शॉट देखते हैं, फील्डर कामयाब होते हैं और बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, बहुत ही जबरदस्त स्टैंडिंग। 2 रन बचाए हैं रहमान ने, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा रहमान की तरफ से। Saved 2 runs there. लगता नहीं था क्योंकि काफ़ी बॉडी इनकी हैवी है लेकिन बड़े एक्टिव हैं अपनी जॉब में। So short break in proceedings here and currently they're on 104 after 12 overs, chasing a target of 186, which means they need 84 of 8 overs at 10.1 an over. 10.2. 10.2 is the required run rate so far. .2 रिक्वायर्ड है इस वक्त रन रेट कनाडा की टीम को। बयासी रन दरकार है जीतने के लिए ये मैच कनाडा को और 8 विकेट दरकार हैं इंग्लैंड को ये मैच जीतने के लिए। अगर मैच ख़त्म होने से पहले, ओवर ख़त्म होने से पहले ये मैच जीतना है। So I think we've had a call from one of our viewers, Bass, and he's saying it might be better for Zishan to bowl not over the wicket but round the wicket to the left hand side, yeah? Because in that way you're changing the line at which the ball is being bowled. And I would agree with him, but the skipper's decided to take Zishan out of the attack altogether. It's a very crucial point because you know he's playing the cross bat and it will be danger from other end. It's my thought. I don't know exactly. No, because by bowling over the wicket, what it will do is the line of attack will be different. It won't be down the leg side. Yeah? So he'll be bowling around the wicket and pitching the delivery on the off stump as opposed to the free hit. So on the leg side. मोसा बॉलिंग में थोड़ी तब्दीली शहजाद को लाया गया है वापस। Okay, so 91. England are 91 for 3 after 11 overs, chasing 211 in the other match against Amir. और अच्छा बॉल शहजाद का, just for a single. रहमान है फील्डर, कोई भी एक स्कोर का इजाफा हुआ। Shahzad's doing the right thing here. You see what our viewer called in and said, bowl to him around the wicket, right? हाँ जी बिल्कुल ठीक बात। मैं असल में राउंड समझा था, मैंने कहा शायद आप राउंड ओवर द विकेट कह रहे हैं, लेफ्ट। बिल्कुल ठीक है, उनका ख्याल बिल्कुल ठीक है। इनको ओवर द विकेट भी जो है वही कराना चाहिए, यही मेरा कहने का मकसद था, लेकिन मैं रॉन्ग समझा था कि आपने शायद ओवर द विकेट कहा है। बात साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। In comes Shahzad and Anjum Malik is the batsman.
अच्छा बॉल, बहुत wide in the block जबरदस्त, hole and well played as well. Yeah. बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा Well बॉल. played. Good cricket there. Shahzad plays in the Premier League up in Sheffield. And जी, बिल्कुल. I like the way he's changing his line of attack, because to the right-hander he's bowling around the wicket, to the left-hander he's bowling over the wicket. Yes. And that's good cricket. That's the Intelligent perfect cricket, and he's bowling really well. So in comes Shahzad to the Canadian batsman. और ये लेग स्टंप पर बॉल And he था. got away with that. He got away with that. लेग पे It hit him on the pad. दाऊद हैं और लेग पैड को हिट किया ये बॉल. दाऊद ने फील्ड किया, किसी भी रन का इजाफा नहीं कर पाए इस बॉल पे. तीसरी बॉल थी इस ओवर की. 2 स्कोर लगे हैं अभी तक ये 3 बॉलों पर. तो काफ़ी बेहतर बॉलिंग का मुजाहिरा रादर दैन प्रीवियस ओवर्स. In comes Shahzad. और एक बहुत बाहर बॉल थी उसको. But that's not a problem, because he's got fielders out there. He's got अच्छा protection. कवर पे इजाज थे खड़े, उन्होंने फील्ड किया इस बॉल को और किसी भी 1 रन का इजाफा कर पाए सिर्फ. So far 4 good balls. बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा शहजाद की तरफ से. सिर्फ 4 बॉलों पे 5 बॉलों पे 3 स्कोर लगे हैं अभी तक. In comes Shahzad. Over the wicket. और फुल टॉस बॉल. और देखें जहां उनको मौका मिला एक लूज बॉल मिली और उन्होंने पूरा फायदा उठाया फुल टॉस बॉल का. That is bad bowling. You know, you bowl a full toss on the leg stump. It's bad discipline. देखिए 4 बॉलों पे सिर्फ 3 स्कोर लगा था. This is the difference, you know. और एक लूज बॉल 9 पे ले गए. This is the difference, you know, between your normal club players, right, and your. In comes Shahzad for the last ball of the over, and Canada, they're well placed there. Much better line, much better line. अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा. Just short of a length, outside the off stump. Much better ball. As well. Yeah. Someone called Keel, batsman. He's got 1 run to हाँ, एक रन है शॉट अकील का 50 बनाने में. Akil Anjum in the green helmet is on 49. And Raza Rahman, Canadian national player, is the player batting with him. And he will be facing the bowling of possibly Rahman, or no, it's Ijaz. Ijaz Ahmed will be coming back into the attack. 8.4 की एवरेज अब चाहिए कनाडा को ये मैच जीतने के लिए. 8.4 की एवरेज से स्कोर बनाना होगा. थोड़ा सा कम हुआ है एवरेज मेरा साहब, नीचे आ गया है 9 से. काफ़ी देर से 9-10 चल रहा था. हाँ जी. और का विकेटें उनके हाथ में है. 7 ओवर का खेल बाकी है सिर्फ. 13 ओवर का खेल हो चुका है. इजाज़ को मेरा ख्याल इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि इजाज़ भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन पहले बॉल पे 2 स्कोर उनको लगे. I think what Ijaz has got to do here is 50 ये की है कि वो. Raza is batting. Akil is in the green helmet. He's 49. So, if I was speaking to Ijaz, I'd be saying you've got to either bowl it full and slightly wide, or just short of a length. That's what I would be giving you the advice. Oh, beautiful ball था. See, this is what I'm saying. Either full and wide, or just short of a length. That was a perfect ball. It was a perfect ball. You know, the lines are there. The umpires can see them, and that is good cricket. एक स्कोर जो है वो इस वक्त बड़ा अहमियत का हामिल है. Of course. और अंपायर पर भी काफी प्रेशर है कि कोई ऐसी. He's got to bowl it full in the block hole. और ये उठता हुआ शॉट था. अब देखते हैं किसको रोक पाता. और फील्डर ने ये जब तक गेंद को रोका 2 स्कोर हासिल किए. बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा हारिस की तरफ से. 2 runs there. 4 रन. So again, 3 बॉलों पे 4 रन. That was half volley. Yeah, and the difference between full length and half volley is quite marginal.
and he's got to bowl. My recommendation to him is either he's got to bowl full or he's got to bowl it just wide at full. और Great ball. काफी वाइड बॉल था और अंपायर का इशारा कि ये वाइड है. He's unlucky there. I think he really is unlucky. Yeah. वाइड बॉल 1 रन का और इजाफा 5 स्कोर 3 बॉलों पे. He was a bit unlucky there. I think that was. We can't see from here, so the umpires quite correctly gave it a wide. And Ijaz just needs एक बॉल जो है वो एक रन जो है वो मैच की सूरत हाल को अच्छी तब्दील करेगी. और ये उठता हुआ शॉट, वेल क्लियर्ड बाउंड्री 6. बहुत ही जबरदस्त, थोड़ा सा आगे पड़ा हुआ ये बॉल, पूरा फायदा उठाया बैट्समैन ने और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर फेंक दिया. काफी लंबा छक्का, मिडल ऑफ द बैट उसको खेले हैं, फ्रंट फुट पर आकर थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर गए और उसको पूरा मिडल किया है बैट को और 6 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर कर दी. 11 स्कोर अभी तक लग चुका है और एक और अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर वहां मौजूद. 1 रन का और इजाफा, एक्स्ट्रा कवर पर थे फील्डर. 1 बॉल गालिबन रहता है इस ओवर का. महमूद साहब 12 स्कोर लग चुका है अब तक इस ओवर में. इसमें कोई शक नहीं है. Off a good length, he just picked it up and smashed it over mid wicket for a beautiful 6. बिल्कुल. So you've got to appreciate that. That's good batting. Poor bowling. You cannot bowl length at this stage. I agree with you. You've got to bowl it either full or just short of a length. और ऑफ स्टंप से बाहर थी ये बॉल. 1 स्कोर मिलेगा. That's 50 for Anjum Malik. 50 अप हुई है अंजम की. बहुत ही अच्छी इनिंग अपनी टीम के लिए खेली है उन्होंने. And you've got to remember these guys play for their national sides in Canada. Yeah? हाँ जी, हाँ जी. These guys play for their national teams in Canada, and you've got to understand, they're quality players. Yeah? And there is a difference there between club players and national ओवर players. मुकम्मल हुआ. Score is 126 for 2 after 14 overs. So they need exactly 60 in 6 overs, which is 10 and over. In comes Shahzad. Anjum is the batsman. Beautiful shot. Short and dispatched through mid wicket. That was a beautiful shot there by Anjum. Both these guys play for their national teams, Canada, and that really was a good shot. In comes Shahzad, bowls to Anjum. Oh, wide ball. England A are 114 for 5 after 12 overs, chasing a total of 200 and they're going to put you away. So, Khalid just, wise and canny captain, just having a quick chat with Shahzad to say, I want you to bowl this line, I want you to bowl this length, and he then has to leave it to the bowler to execute. In comes Shahzad. That's in the air. And that looks like another boundary. और एक और शॉट. 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री से बाहर. I personally think Shahzad has got to bowl either full or he's going to be looking to bowl full slightly outside the off stump. And you can see he's got a third man and he's got a point, right? You've got to focus on a certain, you can't bowl both sides of the wickets. At the moment he's bowling both sides of the wickets and Anjum's batting beautifully. एक्स्ट्रा कवर पे ले लिया फील्डर.
अच्छा, एक और स्कोर का इजाफा। So I'm glad to see him throw it because the last two throws he's thrown have gone for runs. 138 And Shazad has got one ball to come. Raza looking to, in brilliant form. In comes Shazad, bowls to Raza. और Lovely कट शॉट square खेला cut. है, देखते हैं। Lovely square cut just for a single. एक स्कोर बना और 139 इस ओवर के अख्ताम पर। So he's calling again for Ijaz, but you know I would give it a change. I would. Ijaz hasn't quite found the right areas, and I'd be tempted to bring on Zafar. I faced Zafar in the national UK cricket tournament 3 weeks ago, and he was bowling it well. He was good shape, just swinging it outside off stump, just short of a length. So it's a tough decision being a captain. You know, you can't be everybody's friend, and that's the reason why he's there, and he's been so successful. Khalid, he's made England the champions for the last 3 years, and it's based on his knowledge and experience and skill as captain to be able to do that. But we're going to carry on with Ijaz. अभी तक 9.4 की एवरेज दरकार है इंग्लैंड और कनाडा की टीम को। In comes Ijaz. और ये एज हुआ फर्स्ट स्लिप से होता हुआ बॉल लाइन से बाहर। 4 रन्स और मिले हैं। पहले ही बॉल पे महमूद साहब ये 4 रन बन गए हैं, तो प्रेशर विल बी गोज टू बॉलर। Yeah, you know what I say, fortune favours the brave. And you've got to admire Raza there, right? He was lucky, but you know, if you go for your shots, I've always said fortune favours the brave, and he's you know, reaped the rewards of that. I still think Ijaz is bowling the wrong line. I would have liked to have seen him bowl a lot fuller and just outside off stump. और फिर फुल लेंथ बॉल था, but it's a single, you see. It's only a single. एक स्कोर बना, only 1 run, and that's the difference, right? दो बॉलों पर 5 रन्स इस ओवर में अभी तक हो चुके हैं। काफ़ी टाइट सिचुएशन है मैच की महमूद साहब, इससे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन कनाडा इज बेटर पोजीशन। बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है। इस वक्त की जो पोजीशन है वो कनाडा की बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फुल टॉस बॉल, अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा शान की तरफ से, नो दाऊद की तरफ से। दाऊद का हाथ भी डैमेज, थोड़ा सा जख्मी है, लेकिन अच्छी फील्डिंग उन्होंने। Ijaz. So you know what Akhlaq has said to me from Germany? They have their Ijtima there today. और अंसारुल्लाह का इज्तिमा बिल्कुल हो रहा है। But what he said, it's not Ansarullah, it's just Jamaat Ijtima, all right? And for Khudam. And what he said to me is, he said, this is a great way of bringing people from all over the world. And he's enjoying the stream. और फुल टॉस बॉल थे इसको, बड़े ही आराम से, इतना पुअर बॉल था ये उन्हें जैसा। दावत देने वाली बात है कि ये 4 रन्स हासिल किए इस बॉल पर कैनेडियन बैट्समैन अकील ने। बहुत खूबसूरत शॉट, स्कोर बढ़ता हुआ 148। 9 रन 4 बॉलों पे हो चुके हैं मेरे साथ अभी तक इस ओवर में। Hello भाईजान। It's going to need something spectacular because at the moment,
I said it's not easy being captain. Yeah, you are constantly thinking. You are looking at your own. He himself has performed admirably. You know, Khalid's been our best bowler, but you know, it's Anjem has batted exceptionally well. और एक और ये बहुत ही खूबसूरत कैच शहजाद का And Jim's gone and smashed that right into the hands of Shahzad at mid-wicket. सीधा शहजाद के हाथ में इस दफा बाउंड्री क्लियर नहीं कर पाए अकील आउट हुए हैं 148 के मजमूई स्कोर पर 16वें ओवर का खेल जारी है What a brilliant knock there by Anjem Malik. You've got to admire it. तीसरा विकेट People who play for their national sides, their country, अच्छा खेल का मुजाहरा किया दोनों बैट्समैन you can see the difference. You're playing at international level. और ममूसा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि ये लोग वाकई प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और ये प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हैं Fantastic knock. ओवर कम हुआ The new batsman is Mahmood. He hit 50 yesterday, so he's in good knock. Oh yes, I remember. Yeah, he's my namesake. Doveras ground, yeah. So two Mahmoods, one on the commentary, one in the middle of the There's pitch. many Mahmoods. Yeah. 148 16वां ओवर जारी है इसके बाद 4 ओवर का खेल रह जाएगा इस ओवर के बाद अब देखते हैं Ijaz was lucky there with the keeper standing up now. Let's see how he faces it. अच्छी बॉल ओवर मुकम्मल हुआ ओवर नंबर 16 35 रन चाहिए मैच जीतने के लिए 38 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए कनाडा को So 38 required of 4 overs. 9.5 की एवरेज से महमूद साहब इनको रन चाहिए अब ये मैच जीतने के लिए 9.5 9.5 की एवरेज से स्कोर बनाना होगा जीशान को गालबन लेके आए हैं खालिद जफर Zishan's got to bowl on the off stump. He's got 3 fielders on the leg side here on the boundary, and he just must. It is critical that he bowls his discipline, his line and length on the off stump. ये ओवर आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट की हैसियत रखता है ये ओवर चौथा ओवर है At this stage, 4 ओवर रह गए हैं और अगर इस ओवर को वेल कंट्रोल्ड वो रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि मैच काफ़ी हद तक ये देखें उन्होंने फील्डर वहाँ लिया हुआ है शहजाद हैं फील्डर बड़े एक्टिव फील्डर हैं You know, Mubarak Sahab, I slightly disagree on that point of view because in 2020 the game can change in 1 over. Yeah. So it's not 1 over. It's you know it's every single ball at this stage is critical. Yeah. So middles that down to mid on and well fielded by Haris. So good start here by Zishan. 2 runs off 2 balls. Yeah. Has to remain his distance. He's only got 1 fielder out on the offside, so he has to keep his discipline. In comes Zishan, varies his pace. Beautiful shot. थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर था Very too much width. 4 स्कोर हासिल किए हैं by Reza रहमान ने Bhajan 44 स्कोर रह गया है बाकी ये मैच जीतने के लिए चाहिए जो कनाडा को और लेग स्टंप पर ये बॉल था इसको खेलना चाहते थे 1 स्कोर हासिल किया थोड़ी सी मिसफील्ड हुई
Daud saved 3 runs there. 43 43 स्कोर चाहिए अब Lucky to have got off there. 3 इशारिया एक और स्कोर हासिल किया। बहुत ही सेंसनीखेज लम्हात में दाखिल हो चुका है ये मैच महमूद साहब। 156 है स्कोर के अंदर और पॉइंट पे खेला है इस बॉल को। ओह बहुत ज़बरदस्त ओवर, सिर्फ 8 रन बने हैं जी। एक बाउंड्री लग गई उसके, बिल्कुल बाहर बिल्कुल बॉल किया। 8 रन। So 156 for 3 after 17 overs. They need 30 runs of 3 overs, 30 of 18, which is quite achievable in 2020. With Raza Rahman well set in, and Mahmood, a good experienced batsman who scored 50 yesterday in the quarter final. I would favour the Canadians, but this is critical. Khalid coming on to bowl. 10 रन चाहिए पर ओवर, 30 रन 3 ओवर। बहुत ही मज़ेदार मैच और देखने वाले काफ़ी महसूस होते होंगे इस मैच को देखकर कि वाकई एक सेमीफाइनल देख रहे हैं। We're on the edge of our seats here. 30 required of 3 overs. एक्स्ट्रा कवर को ऊपर ले लिया है महमूद साहब और so Khalid knows his lines, right? He's going to pitch it on the off stump and vary his pace and his direction. Beautiful ball. Beautiful ball. Do you know what? His ball stays so low when you're facing him, as I was facing him playing for the USA in the final a few years ago. His ball really does stay low, and in comes Khalid. और फुल लेंथ बॉल उसको, beautiful shot. ये देखिए जो बॉल आगे गिरा है उसको उसने पूरा यूटिलाइज किया। लेग स्टंप पे, मिडिल स्टंप पे था, लेकिन बहुत खूबसूरती से उन्होंने फ्लिक किया है उस बॉल को, फ्लिक मारा है पूरा और पूरा 6 जो है वो हासिल किया ओवर मिड विकेट। Lovely shot, but I have to say that was leg stump. Yeah. I'm a bit surprised with Khalid. He tends to be very disciplined. इतना आगे बॉल नहीं देना चाहिए था। और ये देखा थोड़ा सा पीछे गिरा बॉल और उसको नहीं समझ पाए वो। And a quicker ball as well. बिल्कुल। Yeah. So that's what I was saying to you about his control and his variation of speed. 3 बॉलों पे 6 स्कोर अभी तक हासिल कर पाए हैं बैट्समैन और 10 रन चाहिए उनको पर ओवर और अगर उन्होंने ये मेंटेन नहीं रखा तो मुश्किल हो जाएगी कनाडा के लिए। Khalid bowling to Mahmood. Great bowling. बिल्कुल समझ नहीं पा रहे। That must have been close because there was an appeal both from the bowler and the fielders, and that must have been close. But आखिरी ओवर भी खालिद जफर का है। The great thing is, nobody argues. We get on with it, and they just accept the umpire's decisions. और सीधा गेंद ज़ीशान के हाथ में। Mahmood was a critical player. He got 50 yesterday. बहुत ही ज़बरदस्त ओवर। And this खालिद जफर का 6 रन अभी तक दिए, 5 बॉलों पर 1 विकेट हासिल किया। The match is on a knife edge, as I said. This is what people want to see. They want to see good cricket. They want to see good. But whilst Raza Rahman is there, I still think Canada are the favourites. Yeah, because Raza is, an international player. ये तो बॉल्स की गेम रह गई अब तो, यानी अब 24 रन चाहिए जीतने के लिए। तो जाहिर है वो तो आप कुछ नहीं कह सकते। अभी 2 ओवर और 1 बॉल बाकी है।
24 of 13. 13. 2 runs per over. 12 runs. 12 runs. Yes. Two runs per ball. Per ball. Yeah. Which is quite achievable in 2020. बिल्कुल आखिर पे उनके पास विकेट्स हैं. It's a beautiful और विकेट्स अगर हों तो फिर रिस्क भी ले सकते हैं. So quick water break there by the players as the wicket was taken. Khalid to bowl his last ball of the over. He's taken 1 for 6 in this particular over. In comes Khalid. और उड़ता हुआ शॉट और ये बॉल First ball बहुत ही अहमियत का हामिल था. To come in first ball and smash it for 6. 6, yes. Yeah. And last ball. Oh my God. Great shot. आखिरी बॉल था. ये भी देखें आगे फेंका था, काफी मुंह में दिया. ये बिल्कुल और उन्होंने कोई गलती नहीं की. उसको अच्छी बॉलिंग करवाई थी. 4 बॉल बहुत बेहतरीन फेंके हैं. 1 विकेट भी हासिल किया. Both balls that he bowled on the leg side. बिल्कुल. Were spat for 6. 18 रन अभी चाहिए. 3 और 18 बॉल. Very good. So, you know. 12 बॉल हैं और 18 स्कोर है. कुछ भी नहीं कहा जा सकता. देखें वेस्ट इंडीज के कैसे प्लेयर ने कैसे 4 लगातार 6 मार के मैच फाइनल जिता दिया. Yes. अनबिलीवेबल. बहुत ही मज़ेदार मैच. और शहजाद हैं, मूसा शहजाद को वापस लाया गया बॉलिंग पर. काफ़ी रिस्की होगा फास्ट बॉलर के लिए. काफ़ी रिस्की है. I don't think so. I think you know, Khalid's been successful with Nadeem for 3 years. Yeah, and you've got to have faith in your players, in your bowlers. That's true. And these guys have won it for 3 years, and you've got to. So England A requires 65 from 4 overs, which is quite a tough task, I think. और उठा हुआ शॉट. चार रन की रेटिंग बनने के बाद गुड लेंथ पे बॉल था. ऑफ स्टंप पर उसको कवर के ऊपर से फेंका है और 4 रन हासिल किए हैं. अब 14 रन और 11 बॉल. 14 रन और 11 बॉल. काफ़ी मज़ेदार और दिलचस्प मैच. As I said to you, whilst Raza is there, the Canadians are the favourites. Yeah? He's a phenomenal player. In comes Shahzad, bowling to Raza. और एक स्कोर हासिल किया बड़ी तेजी के साथ. तेरह रन और 10 बॉल. तेरह रन और 10 बॉल हैं कनाडा के पास. ये मैच जीतने के लिए 13 रन चाहिए और 10 बॉल करवाने हैं अपना इंग्लैंड ने. शहजाद हैं बॉलर. Say the Canadians are the favourites at the moment. और ये बहुत ही जबरदस्त 6. बहुत शॉर्ट पिच बॉल था. उसको पूरे बल्ले के साथ मिडल किया और 6 रन के लिए एक रन बोलने से बात की. बहुत ही ज़बरदस्त. क्या गेम की है कैनेडियन प्लेयर ने उनके साथ. बहुत ही आला. He's come in. First ball hit for 6. Second ball he hits for 4. You've got to admire that. It's good. बहुत ही कैलकुलेटेड जो है वो मैच खेला है कैनेडियन टीम ने और लाजवाब.
2 स्कोर हासिल किए। दो और स्कोर हासिल किए। अब 6 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए और करो ना, ये कैलकुलेटिंग इनिंग ये होती है, शुरू से देखे होते हैं, ये बताया ही नहीं एक दफा। बहुत आला और एक और रन का इजाफा, दूसरे रन के लिए जाएंगे और बहुत तेजी से दूसरा रन भी मुकम्मल किया। बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा, बाउंड्री लाइन से गए थे। 2 स्कोर, अब 3 स्कोर चाहिए ये मैच जीतने के लिए। और कनाडा ने बहुत ही आला खेल पेश किया है इस सेमीफाइनल में। 186 जो कि एक बड़ा हदफ नजर आ रहा था। बड़ी ही कैलकुलेटेड गेम की उन्होंने, बड़ा ही तहम्मुल से और आराम से इसको खेला एवरेज के हिसाब से। फुल टॉस बॉल लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। 2 स्कोर हासिल किए हैं और मैच बराबर और स्कोर इक्वल हो गया। 1 रन चाहिए ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला खेल पेश किया है कनाडा ने। एक 185 स्कोर बराबर। आखिरी ओवर खालिद जफर। ठीक हो? 4 विकेटों पर ये स्कोर अचीव कर लिया। हदफ हासिल किया है, बराबर किया है कनाडा की टीम ने। 1 रन दरकार है फाइनल में कदम रखने के लिए कनाडा की टीम को। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग बैट्समैनों ने खेल पेश किया है, बहुत ही आला। किसी भी लम्हे गिरफ्त जो है वो नहीं, अपनी गिरफ्त कमज़ोर नहीं होने दिया इस मैच के दौरान कनाडा की टीम ने। पूरी तरह हावी रहे इस मैच पर, पूरी तरह गिरफ्त मजबूत रखी और आखिरी ओवर में, सेकंड लास्ट ओवर में 17 स्कोर बनाया है कनाडा की टीम ने। एक प्रोफेशनल क्रिकेट पेश की है कनाडा की खिलाड़ियों ने, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त। और ये मैच जीत लिया है। आखिरी बॉल पे 4 रन हासिल किए हैं कनाडा की टीम ने। बहुत ही खूबसूरत खेल का मुजाहिरा। नाजरीन, आपने देखा ये मैच। इस तरह के मैचेस जो है बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जिस तरह कनाडा ने ये मैच प्लान किया, उन्होंने होमवर्क किया और किसी भी लम्हे अपने मैच के ऊपर गिरफ्त को टूटने नहीं दिया। एवरेज के हिसाब से उन्होंने ये मैच खेला और बहुत ही इन्हमाक से, बहुत ही मजबूती से, बहुत ही तहम्मुल मिजाजी से, बहुत ही एवरेज के हिसाब से उन्होंने ये मैच पहले ओवर से लेकर आखिरी ओवर तक और 19.1 ओवर में उन्होंने ये मैच 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया ये हदफ। हमारे साथ आप तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। आपने वाकई इस मैच को बहुत ही इंडिया और पाकिस्तान के जितना एंजॉय किया होगा, जितना मज़ा आपको उस मैच में आया वो इस मैच में भी उतना ही मज़ा आया होगा। बहुत ही आला खेल पेश किया कनाडा के प्लेयर। अस्सलाम वालेकुम।
साहब आप अपना तारफ करवाएं। आप टोरंटो से अच्छा, तो वहाँ कौन सी क्लब में थोड़ा ऊँचा तो ठीक, हमें बताएं आज आपने 50 की है, किस आपको कैसे ये पिच लगी? बहुत अच्छी पिच थी, स्पेशली जितने मैचेस खेले हैं, लास्ट टूर्नामेंट भी मैं खेला था, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर, ग्राउंड क्राउड और बहुत अच्छी, सामने अपोजिशन बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग इज गुड, मज़ा आया, बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत सपोर्ट किया बॉलर्स को भी और स्पेशली बैट्समैन को, अच्छा करेगा वो। अकीब साहब, आप पहले हम जब आपने इनिंग्स स्टार्ट की अपनी बॉलिंग साइड पे, तो हमें ऐसा लग रहा था कि स्कोर जो है वो कुछ एवरेज से ज़्यादा आपको आपके खाते में जा रहा है। तो जब 185 जो है वो बोर्ड पर लगा, हमें ये लग रहा था कि शायद आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी इस मैच, इस हदफ को अचीव करने में। लेकिन हम देख के बड़े खुश हुए हैं कि आपने किसी भी लम्हा जो है वो गिरफ्त नहीं कमज़ोर होने दी अपने मैच के ऊपर। तो क्या आपके मैनेजर या कोच या आपके कैप्टन ने कोई स्ट्रेटजी आपको पहले से बताई हुई थी कि आपने इस तरह इस एवरेज से स्कोर बनाना है, जल्दी नहीं करनी, कुछ ऐसा होमवर्क क्या आपने प्लानिंग बनाई आज? ऑब्वियसली जब हमने सुबह के पिच देखी, बहुत ही अच्छा पिच, ड्राई पिच था, ग्राउंड बहुत अच्छा था और हमें ये तो था कि हम 160 तक ये करेगी पोजीशन हम थे, लेकिन वो बहुत अच्छी स्टार्टिंग और मिली स्पेशली। यानी आपके टारगेट से आपके जो आपने सेटअप किया था उससे ज़्यादा चला? जी, स्पेशली बहुत अच्छा, वो हमारा सोचना ठीक था। जी अच्छा, ओपनर बहुत अच्छा खेला, तो उसने की वजह से फिर कप्तान से जो बात हुई, कप्तान ने कहा कि ग्राउंड अच्छा है, रोलिंग शॉट भी जा रहे हैं, पिच बहुत अच्छा है, तो 10 रन का एवरेज यहाँ बन सकता है अगर हम स्टे करेंगे। ऊपर से ओपनरों ने बहुत अच्छा हमारे साथ दिया, उसके बाद फिर हमने कैरी ऑन किया तो वो अच्छा बनता रहा। एक मोमेंटम में थोड़ा सा स्पिनर इनका जो कप्तान है खालिद अफर जी उन्होंने बड़ी अच्छा कमबैक किया, लेकिन फिर दूसरी साइड से उनका किसी ने साथ नहीं दिया क्योंकि रन्स बनते रहे, रन्स नहीं रुके। तो यही थी हमारी कप्तान की तरफ से कि रन नहीं रुकेंगे यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड बहुत तेज है। दादा साहब से हमारी पहले बात हुई है, उन्होंने भी यही अल्फाज दोहराए थे कि क्योंकि पिच जो है वो हमें भी यहाँ से महमूद साहब से भी मेरी बात हो रही थी, तो हम भी बात कर रहे थे कि जो इस वक्त पिच की पोजीशन है वो तो मुकम्मल बैटिंग पिच है। तो चूँकि हम आपस में बात कर रहे थे कि आपके प्रोफेशनल प्लेयर हैं और बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, तो मेरा ख्याल है कि ये हम ख्याल कर रहे थे कि ये टफ मैच होगा, लेकिन इतना वेल क्या कहते हैं कि मैनेज मैच आप खेलेंगे, इतनी वेल इनिंग खेलेंगे, हमने कभी सोचा नहीं था। हम आपको बहुत बहुत मुबारक पेश करते हैं कि आपने बड़ी ही अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा किया यहाँ पे और एक कैलकुलेटेड जो है वो इनिंग खेली है और बड़े ही अच्छे स्ट्रोक्स जो हैं वो हमारे व्यूअर्स को आपने दिखाएं। इसके लिए हम आपके प्लेयर्स का, आपके बैट्समैनों का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। महमूद साहब, आप कुछ पूछना चाहें प्लीज़? बस यही है, मुबारकबाद और शुक्रिया आपने टाइम दिया है। अब प्लीज़ अपनी टीम के साथ बहुत शुक्रिया, एंजॉय करें, गुड लक, बात होती है आपसे।